tonight, so on and so forth, right? ऐसे जो भी words है या 5 years later, ये सारे हमारे adverbs of time के अंडर आते हैं. And adverbs of frequency, we saw that how frequently something is happening. कोई चीज कितने बार की जाती है. So if I say I always go to the cinema, मतलब मैं बहुत जाती हूँ, right? But if I say I seldom go to the cinema, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत कम जाती हूँ. So I am showing the frequency, कि कितने frequently मैं ये काम करती हूँ. Okay, so these are the two adverbs that we have learned. Today we will start with adverb of place. If you guys can see, you guys can take a screenshot of the three that we are going to discuss today. Adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, right? So शुरू करेंगे adverb of place से. So obviously adverb of place नाम से ही पता चल रहा है बहुत बहुत simple है. अगर किसी place के बारे में बोला जा रहा है, then it is an adverb of place. Simple, कुछ है नहीं. Describes the direction, distance, movement or position involved in the action of a verb. So ये याद रखिए कि although like ये place को describe कर रहा है, किसी place के बारे में बात कर रहा है, it should definitely describe a verb or an adjective or another adverb, right? It has to do one of these things to become an adverb, to qualify as an adverb. तो इसका basic criteria क्या है? एक है कि ये place को describe करेगा, it will describe a place. And the second criteria is, of course, it will describe verb or adjective or another adverb. So what are some examples? Very simple examples are given, like north, everywhere, here, there, forward, downward, up, uphill, downhill, behind. ये सारे हमारे adverbs of place है. इससे भी बहुत बहुत ज्यादा हो सकते हैं. Any place, like the name of a place can also be adverb of place. Okay. So let's look at the example here. I absolutely hate running uphill. I absolutely hate running uphill. So यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, uphill जो है कहाँ पे रन किया जा रहा है, किस direction में रन किया जा रहा है? Uphill, hill के ऊपर. So you are going towards the top of the hill, right? So running जो है, जो action verb है, उसको ये uphill describe कर रहा है. It is showing what exactly or where exactly is the person running, or in which direction exactly is the person running. That is why uphill is an adverb. And why is it an adverb of place? Because it is showing direction, right? So direction, distance, place, movement, position. अगर इनमें से कोई भी चीज show किया जाता है, then it is called an adverb of place. All right. I just want to clear one more thing, कि हर एक word जो place को denote करता है, वो adverb of place नहीं है. All right. For example, if I write a sentence like, let's say, if I write a sentence like north, or north is my favorite direction. Okay, and then I write we are heading north. यहाँ पे दो sentences है, दोनों में देखिए मैंने north का इस्तेमाल किया है, जो कि एक direction है, right? But ये जो first sentence है, north is my favorite direction, इसमें आप देख सकते हैं कि north को मैंने subject के जगह पे रखा है. It is in the place of subject. It is not describing anything. North किसी भी चीज को describe नहीं कर रहा है. मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही हूँ कि north जो direction है, east, west, north, south, उसमें north मेरा favorite है, right? So यहाँ पर north जो word है, वो किसी चीज को describe नहीं कर रहा है. इसीलिए ये noun का काम कर रहा है, इसीलिए ये subject का काम कर रहा है. Okay. And we are heading north जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि north एक चीज को describe कर रहा है. किस चीज को describe कर रहा है? Heading. Heading का मतलब होता है अगर आप किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, अगर किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, so हम heading use करते हैं. You can also use going, right? Both are synonymous here. We are going north या we are heading north. So ये जो heading है, ये एक verb है. अब क्योंकि ये नॉर्थ इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरफ हेड किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में ये इंसान जा रहा है, then here north becomes our adverb of place. Till here north was not an adverb of place in this sentence. Okay, so try and understand this distinction. Okay, just because something is showing place doesn't mean that it will definitely be
an adverb of place. If it is functioning as an adverb and it is showing a place or direction or movement or position, then it is an adverb of place. Okay, guys, I hope this is clear. Bataiye, any questions still here? All right. Okay, let's try some sentences. Who wants to start? Z? Yes, definitely Z. Bataiye. I will be there. One by one. Z, then Vishakha. Okay. Yes, Z. Bataiye. Ma'am, I am here and you are there. I am here and ये भी नहीं होगा. Okay. And you are there. क्यों नहीं होगा जी? देखिए, I am here and you are there में I मेरा subject है. Am क्या है? कोई action verb नहीं है. Am क्या है? Simply linking verb है. Right? यहाँ पे देखिए बहुत एकदम क्लियरली बोल दिया गया है involved in the action of a verb. मतलब अगर एक्शन वर्ब है तभी हम यूज कर सकते हैं. सो हियर हमारा बेसिकली इट्स शोइंग द प्लेस जहां पर ये बंदा खड़ा है या जहां पर ये है. ओके, इट इज नॉट describing any verb. Because it is not describing any verb, it is functioning as a noun in this sentence. Okay, Z. Basically pronoun hai, but you get the point. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. But अगर मैं बोलूं I am going there, तो फिर यहाँ पे there जो है ये adverb बन जाएगा. क्यों? ये going को describe कर रहा है. कहाँ पे जाया जा रहा है? There पे जाया जा रहा है. So there then shows the place where the person is going. It becomes our adverb of place. Understood, Z? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Think और भी सोचिए. Yes, Vishakha, what were you saying? बताइए. Yes, ma'am. My sentence is, I think I have seen that man somewhere. I think I have seen that man somewhere. बिल्कुल बहुत अच्छा सेंटेंस है विशाखा. Absolutely correct, right? The action of seen or the action of seeing happened somewhere, right? So where did you see? I saw the man somewhere. Okay, so again it is describing the verb seen. So it is becoming our adverb of place. Very good. बहुत अच्छा sentence है विशाखा. Yes, Sumit, what do you have? We are running towards north. Running towards north. बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है. बहुत अच्छे सुमित, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहा है कि हम रन कर रहे हैं किस दिशा की तरफ? नॉर्थ की तरफ. सो नॉर्थ इज बिकमिंग आवर एडवर्ब ऑफ प्लेस. बट यू सी सुमित, आपने उससे पहले एक वर्ड लगाया है टुवर्ड्स, राइट? सो ये टुवर्ड्स हमारा प्रीपोजिशन है, right? Towards is our preposition. So this is becoming adverbial prepositional phrase, right? But it is still adverb of place. Very good, Sumit. Okay, thank you so much, Sumit. Yes, Manju, what do you have? Yes, ma'am. I have sentence, ma'am. बताइए. एक second, ma'am. Just जी. No problem. Yes. I have. Sorry. I hope she would be in the park for a walking. For walking. यहाँ पे मंजू आप देख सकते हैं this will not work. क्यों नहीं काम करेगा? ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. I hope she would be in the park for walking. Right? ये आपका सेंटेंस है. यहाँ पर देखिए दो क्लॉजेस है और एक फ्रेज है. Okay, there are two clauses and one phrase. What are the two clauses? I hope. ये एक क्लॉज है. कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि I मेरा सब्जेक्ट है, hope मेरा वर्ब है. राइट? सो इट मेक्स सेंस. सो ये मेरा एक क्लॉज निकल गया, इसको हटा देते हैं. नेक्स्ट जो क्लॉज है हमारा शी, इसमें हमारा सब्जेक्ट है. वुड हमारा क्या है? ऑक्सिलरी है. राइट? Yes. बी इज नॉट एन एक्शन वर्ब. इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब, but it is definitely a stative verb. So okay, I can say in the park is functioning as adverbial prepositional phrase. Okay, yes, I'll consider this. Yes, very nice. Okay, Manju, this is correct. Okay, park is functioning as an adverb of place, but actually पूरा का पूरा यहाँ से जो start होता है in the park, ये हमारा adverbial prepositional phrase है क्योंकि preposition से शुरू हो रहा है, right? In से शुरू हो रहा है. Yes, one more, ma'am. Yes, बिल्कुल, बताइए.
I went to his home. He had left to the SBI branch. He had left for the SBI branch. Okay. So when we use the word left, जब हम यूज करते हैं तो हमेशा for यूज करते हैं. I've left for this place, not to. Okay. Very good. बहुत अच्छा सेंटेंस है. दो इसमें sentences है and दोनों में एक एक adverb of place है. एक है his home, which is functioning as an adverb of place. कहाँ गया? Where did he go? Where did you go? You went to his home. And second है he left for the SBI branch. For the SBI branch पूरा का पूरा adverbial prepositional phrase है क्योंकि for is our preposition. Very good. बिल्कुल सही है. Thank you so much, Manju. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Okay. Yes, Shailendra. can we say he has left the campus? He has left the campus. Absolutely. If we say he has left the campus, then the campus is functioning as an adverb of place. Nothing else, just adverb of place. Because what has he left? Where has he left? So he has left the campus, right? Okay. Okay, absolutely correct. Yes, Soumya, do you have a sentence? I am forwarding to some lines. One by one. Anupam, yes, बताइए. I am forwarding sentence to you. Okay, yes, बताइए, बिल्कुल, sentence बताइए. I am forwarding sentence to you. To you, I am forwarding a sentence to you. No, but ये कैसे होगा? यहाँ पे कोई place का तो mention नहीं है. This sentence is not really incorrect. I won't say it is incorrect, but it does not mention a place, right? If you were saying, I'm forwarding the letter, I'm saying, I'm forwarding the letter, let's say, to the head office. Okay. यहाँ पर क्या हो गया? आप फॉरवर्ड कहाँ पे कर रहे हैं? Where are you forwarding the letter? To the head office. This is functioning as adverbial prepositional phrase. Understood, Anupam? Yes, ma'am. Okay, so एक जगह है जहां पर भेजा जा रहा है. So ये जो verb है forwarding, इसको describe क्या कर रहा है? To the head office. कहाँ पर भेजा जा रहा है? Where is it being forwarded? It is being forwarded to the head office. Understood, Anupam? Okay, understood, ma'am. But only head office, जैसे कि किसी के मोबाइल पर मैसेज हिंदी में बोल सकते हैं. मैं तुम्हें फोन में नहीं, ये तो गलत होगा. नहीं, आप बोल सकते हैं. You can say I will forward you the message on your phone, or I will forward you the message. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. But that is not showing place. Place नहीं शो कर रहा है. आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी जगह पर फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं. Understood, Anupam, the difference? Okay. All right. Yes. Next, I think Soumya had a sentence. Soumya, बताइए. Yes, ma'am. The market is not far from my house. Not far from my house. The market is not far from my house. Yes, it is correct. Very good. बिल्कुल सही है. Okay. So, ma'am, ये adverb far होगा? Adverb नहीं, far तो हमारा वो है. क्या बोलते हैं उसको? My house. Oh, sorry. ये नहीं है. Like this is not working. Okay. यहाँ पे is हमारा verb है. So यहाँ पर from my house is not really functioning as an adverbial phrase because it is not really describing any action. किसी action को describe नहीं कर रहा है. Right? Yeah. But ये adverbial phrase की तरह काम कैसे कर रहा है? I'll tell you. Because यहाँ पे far क्या है? Anyone? Far is? Distance बता रहा है ना मैम? जी, but far कौन सा part of speech है? We have learned about this far, further, furthest, far, farther, farthest. Adjective. Superlative. Yes, adjective. Superlative मतलब adjective, right? So far is an adjective. Okay, let me just explain this a little bit. देखिए, जी, positive degree में है. Very good, very good. Market is the subject. Verb हमारा linking verb है.
सो लिंकिंग वर्ब है, मतलब इसको कोई चीज डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लिंकिंग वर्ब को डिस्क्राइब नहीं किया जाता. ओके, वी ओनली यूज एक्शन वर्ब. यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब किया जाएगा, तभी जाकर वो एडवर्ब बनता है. सो दिस इज नॉट a verb that can be described. But far is basically what? Far is an adjective that is describing the market. I can say that the market is not far. So far is describing the subject. From my house, this part is describing the adjective. Okay. This part from my house is describing the adjective, that is far. How far? Far from my house. Okay, understood. So something that describes adjective is definitely an adverb. So this is functioning as an adverb, but it is not describing verb. It is describing an adjective. And because it is starting with from, which is again a preposition, then it is becoming adverbial prepositional phrase. Understood, Soumya? Yeah, ma'am. Thank you. Clear है? बिल्कुल, बहुत अच्छा sentence है. Very nice, Soumya. Okay, after Soumya, actually, I think Amit had a sentence. Amit, would you like to make a sentence? It is an uphill task. It is an uphill task. आप बताइए शैलेंद्र, why is this not an adverb? You tell me. Because ma'am, uphill is working as adjective. So you know, right? Uphill is working as an adjective here. देखिए, it हमारा subject है, right? And is the only verb, linking verb है, so किसी चीज को describe नहीं किया जा सकता, इस verb को describe नहीं किया जा सकता, and is just an article, उसको हटाइए. अब task है एक noun, right? Noun है task. Uphill क्या कर रहा है? Task को describe कर रहा है. कैसा task है? Uphill task है. Basically difficult task को हम बोलते हैं uphill task, right? So uphill is describing a noun, so of course it is an adjective, not an adverb. Okay. Okay. Good. Okay. चलिए. Next, let's try. Who wants to try? Manju wants to try. बताइए. Vishakha. Okay, Vishakha. Manju, then Vishakha. Yes, Manju, बताइए. Yes, ma'am. The multi-special hospital is just far from walkable distance. Multi-speciality hospital. Speciality hospital is just far from my house. From my house. Yes, absolutely correct. Walkable नहीं लिखेंगे मैम, walkable distance कहाँ adjust होगा? बोल देती हूँ मैं एक सेकेंड. The multi-speciality hospital is just far नहीं होता है, just near my house होता है. जब हम just use करते हैं, so ये दिखाने के लिए कि कोई चीज कम है, इसीलिए हम just use करते हैं. So you will say really far. Okay, really far from my house. And from my house again, adverbial prepositional phrase है. Really भी adverb है. Okay, really is also an adverb, not adverb of place, of course. So यहाँ पे बोल सकते हैं the multi-speciality hospital is really far from my house. It is not a walkable distance. Okay. Yes, all right. But इस sentence में कोई वो नहीं है. This sentence does not have any adverb of place, right? Okay, yes. One more sentence. बताइए मंजू. One more, not my ma'am. Previous sentence I have doubt. Yes. You taught us she would be in the park for a walking. Ma'am, you told what you told. I skipped in my mind. Would you please repeat it? Definitely, Manju. देखिए, you remember clauses, Manju? Yes, clauses and phrases, right? So yes, यहाँ पे दो clause है, एक phrase है. There are two clauses, one phrase in this sentence. Okay. The first clause that I have is, one second, let me take a different color. The first clause is I hope. Okay. Yes. The second clause is she would be in the park, and the third clause is for. Sorry, this is not a clause. This is the phrase. For walking is phrase. Okay. Now what is happening, you can see here. I hope, why is this clause? Because this is a complete sentence. Complete sentence. I है, subject है, verb है, hope. Okay. So this is a complete sentence. इसको हटा देते हैं. Let's keep this aside. She would be in the park for walking. So she would be in the park. She is the subject. Would is the verb. Now would is what kind of verb? Modal, right? Subject. She is subject.
would is a modal verb. yes, Remember, will, would, shall, should, modal. modal, Yes, ma'am. right? Modal है. Be Yes. is a stative verb. ये stative verb है, right? ये state को दर्शाता है, कोई action नहीं दर्शाता है, state को दर्शाता है. And in the park जो है, ये दिखा रहा है, where is she? Yes, please. She is in the park. So this is Yes. adverbial prepositional phrase. Adverbial prepositional क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये It in जो started है from ये in. preposition. Right, Yes, ma'am. exactly. But it is showing place as well. So it is definitely an adverb of place, but adverbial prepositional phrase है. Okay. And for walking जो है, यहाँ पर walking भी हमारा adverb का काम कर रहा है, right? For why is she in the park? Because she is walking there. Okay, for walking. So ये भी adverbial prepositional phrase है, but ये अलग सा phrase है. Okay, it's not a phrase that is showing it is not showing place, it is rather showing activity. What is the person Yes, doing? yes. It is activity showing. Yes, Right. ma'am. Okay. Thank I you, hope ma'am. this is clear. Most welcome. Yes, Vishakha, बताइए. Yes, ma'am. He looked up He looked up and a and big ripe mango, a big ripe mango mango was hanging overhead. His overhead, or we can say his overhead, or we can say only overhead. Only overhead. Overhead is fine. And a big ripe mango was hanging overhead. This is correct. Okay. Absolutely correct. Because overhead is showing where is the mango hanging. The mango is hanging overhead, right? So verb को describe कर रहा है. Yes, very good. Very Here good. it is up, ma'am. He Yes, he looked up. So up is Right. also adverb of place. Absolutely. Absolutely. Both of them are adverb of place. Yes. Yes. Anything else? ma'am. And, Soumya has a sentence. one Okay. Yes, and Vishakha, बताइए. ma'am, Yes, so Vishakha. we often say that think of the devil and think of the devil. It comes. Hello, ma'am. Am I audible? Think Hello? of the devil. Yes. Think of the And- devil. And here he comes. Okay, ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. Think of the devil बोलते हैं तो that is like kind of a sentence in English language. But okay, think of the devil and here he comes. This is correct. So Yes, बताइए. okay, so here is here work as a adverb of place. No. Here is no. not working as an adverb of place. It is working as a Dummy pronoun. Correct. Yeah, ma'am. Okay. That's why Here I'm he comes. asking. Yeah. Okay. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. चलिए. Yes, Swami, I think you have a sentence. Ma'am, I have two sentences. बताइए. First is the thief ran away with this money. Ran away with This money. this money. And second is a dog was run down by a motor car. Dog was run down By a motor car. by a motor car. I think there is a little bit of misunderstanding here. Soumya, run down is not showing any place or direction or position. Okay, it is showing. It is a verb. It is simply a verb. It is what is it called? Preposition or मैम रन डाउन वन मतलब एक साथ लिखना है या अलग लिख सकते हैं? एक साथ भी लिख सकते हैं. Okay, as far as I know, but it is a that verb. What is it called? I forgot. Phrasal verb. Phrasal verb, right? Thank you. Phrasal verb. Okay, run or down. It is a phrasal verb. So was run down. ये पूरा का पूरा verb है sentence का. Okay, buy a motor car again is definitely functioning as an adverbial prepositional phrase, but it is not showing the adverb of place. Adverb of place नहीं दिखा रहा है. It is showing how was the dog run down by a motor car. Okay, so adverbial prepositional phrase तो है, but adverb of place नहीं है. Understood, Soumya? And the first sentence is correct. The thief ran away with this money. So Away is the adverb of place. It is correct. Okay. Okay. Yes. Manju, do you have a sentence?
Yes, ma'am. बताइए. Ram came Ram borrowing money my home this morning. to borrow money. Ram came to borrow money from me. Okay, 1 second. Ram came. यहाँ पे होना चाहिए. Ram came my home to borrow money this morning. So you will say Ram came to my home to borrow money from me this morning. Very good, Manju. Absolutely correct. To my home is functioning as adverbial prepositional phrase, and it is showing, of course, place. And you can see in this morning is functioning as adverb of what? Time. Adverb of time. Very good. बिल्कुल सही है Manju. Very good. Thank you. After Okay, Manju, ma'am. yes, Shailendra, yes. Okay. Ma'am, to click good pictures, we hiked uphill. To click good pictures, we hiked Uphill. uphill. बिल्कुल सही sentence है. Absolutely correct. Okay. Ma'am, Anything one else, sentence. Shailendra? No, ma'am. Thank you. Okay. Okay. Yes. What is the meaning of rundown? Rundown मतलब गाड़ी के नीचे आ जाने को rundown बोलते हैं. So, Okay. ma'am, it means killing. Not really killing. It is a specific way of killing. If someone is killed by coming under a car because they are run over by a car, like उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है, then it is called run down. Okay. Okay. And run over भी बोलते हैं, if I'm not wrong. 1 second. कहाँ गया? Oh, मैम, sorry, वो I've not written. sentence आपने ये कर दिया. Yeah, because उसमें नहीं था adverb of place, right? हाँ. So you can also say that the dog was run over by a car. Okay. Ma'am, Run one down. sentence. जी सौम्या, I have one sentence. बताइए. He runs after every fashionable thing. After every Fashionable fashionable thing. यहाँ पे every fashionable thing is definitely working as an adverb, but not an adverb of place. It does not show a place. It shows a thing. Okay, Soumya. So he runs after every fashionable thing. What is he running after? Every fashionable. मतलब वो फैशन की हर चीज के पीछे दौड़ता है. Excuse me. Yes, I can understand what you're saying, but this is not an adverb of place. He is an fashionista. He is a fashionista. Yeah, that is correct. But again, nothing to do with adverb of place. But the sentence is absolutely correct. Okay, and this sentence is also absolutely correct, but it does not have an adverb of place. Okay, Soumya. Okay, ma'am. But it does have an adverb because it is showing what he runs after. All right. आप जैसे जैसे different types देखेंगे, you guys will understand there are so many different types, so many uses of adverbs. You will understand better. Yes, Tarla, do you have a sentence? Yeah, ma'am. बताइए. I will visit exhibition at Cubic Mall. At the Cubic Mall. Very good. बिल्कुल सही है. Absolutely correct. Okay. So at the Cubic Mall, the entire thing is adverbial prepositional phrase. Very good. Thank you so much, Tarla. Yes, Manju, do you have a sentence? Yes, ma'am. One more. बताइए. बिल्कुल. Seema went to her brother's house to give Rakhi. Her brother's house to give Rakhi. Rakhi. बिल्कुल सही है. Absolutely correct. Okay. Ma'am. So usually Rakhi is not given to tie the Rakhi, right? ऐसे हम बोलते हैं because it is tied around the person's hand. And ma'am, instead of went, we can use visited. She visited बिल्कुल. her brother's So to house. नहीं होगा फिर. Visited. You can say Seema visited her brother's house to tie the Rakhi. Okay, absolutely.
Very good. Yes. Who is next? Ma'am, Harish. May I? One by one, guys. Ants were climbing to a hill. Ji, Anupam. Ants were climbing to a hill. Ants were climbing uphill. बिल्कुल सही sentence है. Very good. Ants were climbing uphill. Okay. Absolutely correct. Yes, Harish. What is your sentence? बताइए. Ma'am, बताइए. tell me, the price Yes. is climbing uphill for doing puja. I did not get the sentence. Can you repeat it once more? The price is climbing uphill. The prices. Price. Price, right? Price, right? Pric. Priest. Oh, the Price. priest. The priest, yes, the priest. Yes, priest is climbing uphill. Very good. बिल्कुल सही sentence है. The priest is climbing For up. doing Yes, what else? Harish, बताइए. Yes, Harish, please continue. For? Your voice is actually breaking. I think you have network issue. There is also... Yes, Harish, I really can't hear you properly. You can type in the chat box. Zoom chat box, type कीजिए. I'll write it down. Okay, Harish? ma'am, Yes, but this is this sentence is... You are, but your voice is cracking. Okay, tell me, the priest is climbing uphill? for doing puja to God. Okay, okay. For doing puja नहीं होगा. To offer or to worship. Perform. Yes, you can say to perform puja. You can say to offer his puja to God. You can also say that. To But offer you his can also obedience. obedience. Not really. To offer his Worship is the right word. worship is the right word. I would say yes. Okay. Offer के साथ एक कुछ word होता है. I've forgotten. अरे, it's not coming in my mind right now. But offer के साथ होता है something like some kind of like bhakti जिसको बोलते हैं. Pray, ma'am, pray, प्रार्थना. Right. Thank you. Thank you. So to offer his prayers, you can say. Okay. To worship Okay, God or to offer his prayers. To प्रेयर मतलब दूसरा होता है मैम. प्रेयर मतलब प्रार्थना करना है. प्रार्थना. Right. Correct. But he is doing puja, ma'am. Like he is saying some slokas and Yes, it does not always have to be shlokas. You can also offer prayers just by what to say. In India, we join our palms and we stand in front of the God, close our eyes, and we offer our prayers. It does not have to be prarthana or like shlokas. Not necessary. Okay, prayers. Everyone has their own way of praying. It can be anything. So you can use it in two ways. You can say the priest is climbing uphill to offer his prayers to God, or you can say the priest is climbing uphill to worship God. Both are correct. Okay. Ma'am, there is one more. Yes. The priest is climbing uphill to pay his obeisance. 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 Okay, I don't know about this word. I'll have to check and tell you. you. Ma'am, to pay obeisance means ma'am, to bow down and show respect. Okay, okay. So this I did not know. Okay, Yes, so you can also use. Yes, ma'am. Obedience, माथा टेकना इसको बोलते. Okay, I did not know this. To pay his. Tell me the spelling, Shailendra. O-B? No, ma'am, not his, ma'am. To pay obeys. There is no need of. Okay, to pay. Yes. I-S-A-N-C. Okay.
Obeisanc. Thank you. Very nice. I learned a new word. So to pay obeisance, obeisance होना चाहिए. I think obeisance. The pronunciation maybe obeisance to God. Okay. Very nice. Very Ma'am? nice. Yes. बताइए. Harish, I One think has sentence. 1 second. Soumya. Harish has one more sentence. I'll give you a chance after that. Yes, Harish, बताइए. The Gold Gumbaz Express is running Hubli to Bangalore daily. The Gold Little Gumbaz Express. The girl. Gold Gumbaz the train name. It is train name. The Gold Gumbaz Express. Okay, the something express I can hear. So I'll just write Okay. The express because I cannot really understand. So the express is running. Hubli to Bangalore daily. Hubli to Bangalore daily. Okay, Hooghly to Bangalore. To Bangalore. HUBLY. HUBLY. I don't know what place you said, but I think it is a name of a place, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is also a name It of is a in place. Karnataka. Okay. Okay, I don't Yes, really ma'am. know. I'll just write Kolkata. Okay, so the express is running Okay. Kolkata to Bangalore daily. Absolutely correct. Kolkata to Bangalore is functioning as an adverb here. Okay, where is it running? Kolkata to Bangalore. And daily is also an adverb. What kind of adverb, guys? Daily? Time. Frequency. Frequency, Frequency, right. ma'am. Not showing time, showing how much it happens, how many times it happens every day, Yes, right? Daily. yes, ma'am. Frequency. Good. Frequency. Very nice sentence. Thank you so much, Harish. Very good sentences. Keep making sentences. Yes, Soumya next. Bataiye, Soumya. Ma'am, he opened a hospital in his native village yesterday. Open नहीं होता है Set up? Soumya. He set up भी नहीं होगा. Hospital is not something that you can set up like a tent, right? एक दिन में तो नहीं Okay. होता है. So you can say he inaugurated Inaugurated. the hospital In his native village. in his Native village. native village yesterday, right? Yes, ma'am. और अगर आप सिंपली बोलना चाहते हैं कि उसने अपने विलेज में एक हॉस्पिटल बनाया है, then you can say he established a hospital in his native village. You can also use words like he constructed, established. ये सब आप यूज कर सकते हैं, okay? Because it is like a huge project. एक दिन में नहीं होगा, right, Soumya? So, ma'am, Absolutely. In his native village is functioning as adverbial prepositional phrase. Native village बिल्कुल adverb of place है. And yesterday is functioning as what? What adverb? Yesterday same. Adverb of Frequency. No, Time. Time. It is Adverb of showing time. simply time. Adverb of Time. time. Very good. Very Ma'am, good, Soumya. Yes, Ma'am, Shailendra. the pronunciation for this word is obeisance. 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 Okay. Yes, Yeah, yes. that makes sense. Correct. Obeisance makes sense. Okay, very nice. Yes, Thank you. yes. Thank you so much. चलिए, next Vishakha has a sentence. Yes, Vishakha बताइए. Vishakha? Okay, no more sentences. चलिए, I think adverb of place is very Ma'am, clear. Yes, Zee? Yes, okay, बताइए. She lives behind my office. She lives behind my office. That is absolutely correct. Okay, she lives behind my office is absolutely correct. Yes. So behind my office is functioning as prepositional adverbial phrase, right? Yes, Okay. ma'am. एक बात बताइए मुझे. Behind तो मेरा preposition का काम कर रहा है, right? And my office is functioning as adverb of place. But अगर मैं बोलूं, her house is behind my office, तो क्या ये adverbial prepositional phrase है? Her house is behind my office. Yes, ma'am. कैसे? Yes, Meera? Because, ma'am, in this sentence, the place are showing, ma'am, is showing. But it's adjective. Adjective. Her house is not adjective. इसको subject complement बोलेंगे. But my question is क्या कहाँ show तो कर रहा है, place तो show कर रहा है. That is correct, Meera. But is it defining जो definition है? Is it like
complying to the definition of an adverb. Adverb का definition क्या है? Either it will describe a verb or Ma'am. an adjective or another adverb. Is it Yes, describing anything or any of these things? Yes, ma'am. It is describing as adjective adverbial phrase. Not adjective adverbial. You're very close, Manju. Preposition ना. Preposition है. हाँ, Prepositional. है. अब ये adverb का काम नहीं कर रहा है, adjective का काम कर रहा है, क्योंकि ये house को describe. So adverbial prepositional phrase की जगह इसको बोला जाता है adjectival prepositional phrase. Okay? Adjectival prepositional phrase. Yes, Okay. agree. Understood. ये थोड़ा सा difference आप लोग you guys will learn this in more details when we are discussing preposition. Preposition discuss करेंगे, adverbial prepositional phrase, adjectival prepositional phrase, इसको अच्छे से देखेंगे. But try and understand this difference. एक में ये lives को define कर रहा है, right? Behind my office. इसीलिए ये adverbial prepositional phrase है. दूसरे में behind my office is describing the house. कोई action नहीं है जिसको describe कर रहा है, इसीलिए ये adjectival prepositional phrase है. Okay? और details में पढ़ेंगे guys, don't worry. So I hope adverb of place is absolutely clear. Any doubts, any questions? Clear, ma'am. Very nice. चलिए, we will move on to adverbs of manner, right? So ये adverb of manner जो है, नाम के हिसाब से बिल्कुल आपको पता चल जाना चाहिए. It talks about the manner in which something is done. Manner मतलब किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है, how something is being done. Okay, यहाँ तक adverb of place. So you can see, just एक चीज थोड़ा ध्यान देखिए. Adverb of time, what does it show? I'll just write it here. Okay, adverb of time answers the question rather when. Okay, ये कौन से प्रश्न का उत्तर देता है? When something happened, right? I went to the mall yesterday. When did you go? I will see you 5 years later. When will you see me? Okay, so it answers the question when. Adverb of frequency, what does it answer? It answers the question how many times, or it can also be like how often, or how frequently, right? This is the question that we are talking about. How many times or how frequently? So for example, if I say I go to the film, I watch films daily. So how many times do you watch films in a week? Or how frequently do you watch films? If I say I occasionally go to my to a temple, so it means how often do you go to a temple? How frequently do you go to a temple? So how many times? ये question का जवाब देता है. Adverb of place क्या जवाब देता है? Where, right? Simple. कहाँ पे हो रहा है काम? I went to the mall. So where did you go? Right? Simple. So it answers where. Adverb of manner जो है, ये जवाब देता है इस प्रश्न का how. How something was done. Okay. So यही है हमारा adverb of manner. It tells us how something was done. Simple. So let's look at this. देखिए क्या क्या words है. यहाँ पे क्या बोला गया है? It describes how something happens or how someone does something, usually formed from adjectives. Remember this phrase. Usually formed from adjectives by adding. क्या add करते हैं हम? ly. ly add करके adjective से adverb of manner बनाया जाता है. All right. Remember this. So क्या हो रहा है देखिए, beautiful हमें पता है beautiful क्या है? Adjective है. She is beautiful. He is beautiful. Beautifully हमारा adverb है. Wonderful adjective. Wonderfully adverb. Slow adjective. Slowly adverb. Careful adjective. Carefully adverb. Positive adjective. Positively adverb. Dead adjective. He is dead. They are dead. Deadly adverb. Okay. So you understand, ly लगाकर subject adjective के बाद ly लगाकर हम adverb of manner बनाते हैं. कैसे कोई काम किया जा रहा है? So he walked slowly towards the bar. He walked slowly towards the bar.
कैसे चल रहा था? How was he walking towards the bar? The question will be how was he walking towards the bar, and the answer will be slowly. So slowly is telling us how he was walking, describing the walk. What is it describing about the walk? The manner of the walk, how it was done, right? It was done slowly. So slowly is functioning as our adverb of manner. Clear, guys? बताइए. For example, she sang beautifully. How did she sing? Beautifully. They danced wonderfully. How did they dance? Wonderfully. Carefully. She picked it up carefully. How did she pick it up? Carefully. They passed away sadly. Right? How did they pass away? No, not really. ये थोड़ा खराब sound कर रहा है. Let's say they sadly did not complete the work. Okay, they sadly did not complete the work. So how did they not complete the work? Sadly. Okay, happily. They happily danced in the rain. How did they dance in the rain? Happily. So on and so forth. I hope you get the hang of it, guys. Yes, बताइए. Ma'am, what is the meaning of deliberately? Deliberately मतलब जानबूझकर. I deliberately answered the question. मैं जानबूझकर उस क्वेश्चन का जवाब दिया. या फिर you deliberately hurt me. आपने जानबूझकर मुझे hurt किया है. Okay, deliberately means जानबूझकर. Hurt किया या hurt किया है? किया है. You deliberately hurt me. You did. Okay. मुझे hurt किया है. Okay. Yes, शैलेंद्र बताइए. What sentence do you have? He deliberately made that comment. It was not a slip of tongue. Very good. He deliberately made that comment की जगह पे आप like if you can use comment as a verb, why add made that? He deliberately commented that was not a slip of tongue. It was not a slip of tongue. Very good. बहुत अच्छा sentence है. Absolutely correct. Right? Yes. Next, Z बताइए. Anisha ma'am teaches happily us. Yes, Anisha ma'am, most definitely. But teaches, right? Anisha ma'am is singular. Teaches us happily. Okay. Yes, ma'am. Absolutely, I completely agree with this sentence. Very good sentence. Thank you so Ma'am? much, Z. Yes. One by one. Soumya बताइए. He reads English attentively. Very good. Very good. He reads English. English is not something that you read. Okay, it is just a language. So you can say he reads English stories attentively. बहुत अच्छा sentence है. Very good, That Soumya. he may speak fluently. So that he may speak fluently. So that he may speak fluently. बहुत अच्छा sentence है. Very good, Soumya. Okay, one by one I'm going. He met me accidentally. He met me accidentally. बिल्कुल correct है. Very good. बहुत अच्छा sentence है again. Yes, मीरा बताइए. Yes, ma'am. She was cutting fruits carefully. Oh, very good. She was cutting fruits carefully. Absolutely correct. Very good, Ma'am, Meera. Yes. Ma'am. He died yesterday. He should have swum carefully. Okay, he died yesterday. He should Comma have लगाएंगे. He should have swum carefully. बहुत अच्छे. Very good sentence. Very good. Ma'am. Yes. Ma'am. One by one, guys. Everyone will get a chance. Don't worry. Let's start with Manju. Yes, Manju, बताइए. Yes, ma'am. The peon behaved with clerk very badly. Oh, very good. The peon behaved with the behaved के बाद लगाएंगे. Behaved very badly with the clerk. Okay. बहुत अच्छे मंजू. Very good sentence. Ma'am, one more, ma'am. बिल्कुल बताइए. The toddler was laughing very cheerfully. Was very good. Was Third one, laughing. ma'am. Last one. The Laughing, you know, like बच्चों के साथ giggling ज़्यादा अच्छा लगता है. Okay. Giggling. Okay, very giggling. better लगता है. Laughing is not incorrect, but giggling ज़्यादा अच्छा लगता है. Very cheerfully. बहुत अच्छे मंजू. Very good sentence. Last one, बताइए. ma'am. बिल्कुल बिल्कुल. The son behaved
deliberately with his father on the occasion of wedding. The son behaved Deliberately with his father on the occasion of wedding. On the occasion of his wedding. Okay, with his father on the occasion of his wedding. So on the occasion nahi hoga because it's not really an occasion. You can simply say on his wedding. Okay. On his wedding. Okay. और एक चीज behaved behaved, how did he behave? Behave तो हम सबके साथ करते हैं, but किस तरीके का behave? Like अच्छा बुरा. So he behaved mannerlessly. Yes. So you will say इस deliberately को हम क्या करेंगे? इससे पहले लगा देंगे, behaved से पहले लगा देंगे. The son deliberately behaved mannerlessly with his father on his wedding. Understood? Yes, ma'am. Okay. The son behaved. Okay, the son deliberately behaved mannerlessly with his father on his wedding. Right, ma'am. Thank you. Absolutely. Yes. Sanjay or Sajna, someone has written in the chat box. I think Sanjay. Sanjay, you have written deliberately took time for thinking or to ought ing acting. Can you explain this, Sanjay? Would you like to tell me what this is? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon. Good afternoon. बताइए. Ma'am, I think the deliberate is something kind of we take a time and after took a lot of time and then we create something. No, Sanjay. Deliberately का मतलब बिल्कुल simple है, जानबूझकर. Okay. अगर मैं आपको बोलूं कि संजय आपने जानबूझकर उसको मारा, then it will be Sanjay, you deliberately hit him. Okay, आपने जानबूझकर किया. Something that you understand and you do it. Okay. In this case, जानबूझ के ma'am means I took a lot of time, ma'am. Then I create something. Then I act something. Then you act on the impulse. Maybe आप सोचकर कर रहे हैं काम because you are thinking and doing. It's not a spur of the moment, right? When I took a time for opposite of deliberately is suddenly. Yes, absolutely. Deliberately means suddenly हो सकता है या फिर unintentionally भी हो सकता है. Yeah. Okay. Unintentionally. Yes, you are correct. Yeah. Okay. Yes, Sumit बताइए, what sentence do you have? He done his work beautifully. He has done his work beautifully. बहुत अच्छे सुमित, very good. Tense करेंगे तो और clear होगा why we are using has. Very good Sumit. Okay, Thank you. thank you. बिल्कुल correct sentence है. विशाखा बताइए. Yes, ma'am. Our soldiers fought bravely in that war. Very good. Very good. Fought bravely in the war. बहुत अच्छे. Very good. Yes. One more sentence, ma'am. जी विशाखा बताइए. He can play piano easily. He can play the piano easily. जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा जाता है हमेशा द लगाया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच विशाखा. मीरा बताइए. Ma'am, at first, I want to ask, ma'am, the peon behave very badly. Here, very is also adverb, na, ma'am? बिल्कुल, absolutely, it is describing another adverb, so it is also an adverb. Adverb of degree है, उसके बारे में हम सीखेंगे इसके बाद. Okay? Okay, ma'am. My sentence is, ma'am, she was dancing in the party happily. Dancing happily in the party. Happily in the पार्टी. देखिए ये लास्ट में मैंने हैप्पीली क्यों नहीं लगाया, अगर आप मुझसे पूछेंगे, द आंसर इज बिकॉज द एडवर्ब शुड बी इन द सेम क्लॉज एज द वर्ब. जिस वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी के क्लॉज में होना चाहिए. इन द पार्टी इज अ सेपरेट फ्रेज, बिल्कुल सेपरेट अलग फ्रेज है. ओके, सो इसीलिए उसके बाद नहीं लगेगा, उससे पहले लगेगा. अंडरस्टूड मीरा?
Okay, good, very nice, Meera. Thank you. Ma'am, After Meera, Tarla बताइए. Yes. it was a deadly attack by terrorists. It was a, one second. It was a Deadly attack deadly attack by terrorists. by the terrorist. बताइए शैलेंद्र, why is this not an adverb? Ma'am, attack is verb and we are defining it with deadly verb. No. Deadly adverb. Attack is not working as a verb here. Attack verb हो सकता है, but यहाँ पे verb नहीं है. Attack. Attack is noun. Attack is noun. Very good. Attack can be both verb and noun. यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा verb है, that is was. देखिए अ लगाया जा रहा है, verb के पहले तो कभी भी अ नहीं लगेगा, noun के पहले लगेगा, right? Deadly can function as both adverb and adjective. Okay? दोनों हो सकता है. It is a deadly snake. It is a deadly snake, right? Snake क्या है? Noun है. वहां पे adjective बन गया. But if I say he attacked, या फिर He attacked deadly. he attacked deadly नहीं होगा. I think deadly is not an adverb. थोड़ा check करना पड़ेगा. Okay, I'll check and see. Okay, I'll just let you guys know in a second. थोड़ा सा check कर लेती हूँ because deadly adjective adverb. No, it can also be an adverb. Her skin was deadly pale. Yes, इसमें हो रहा है ये adverb. But ये verb को define नहीं कर रहा है, adjective को define कर रहा है. Okay, I'll just give an example once. Shoot, deleted everything. So sorry guys, 1 second. देखिए, Shailendra, we are using it to describe another adjective. I can say it was a deadly poisonous snake.
Good afternoon, everyone. Pro learners, quickly join the Zoom meeting. All right. So guys, today we are going to learn how to tell a horror story. Yes. आज हम present, आज हम past perfect का use करेंगे और उस past perfect में हम ये learn करेंगे कि कैसे हम डरावनी कहानी सुनाना सीख सकते, मतलब सुना सकते हैं. So this is what we are going to learn today. I hope this will be a fun session. So पहले past perfect tense क्या होता है, कहाँ use होता है? If someone knows, please answer. कि past perfect tense का क्या formula होता है, उसे हम कहाँ use कर सकते हैं? Ma'am, past perfect tense. Yes, sir. Past perfect tense is used when we want to describe a thing which was started in the past and already and ended in the past. And the formula of that is subject subject plus had plus third form of verb and plus object. Very well done, Tarup. Very well done. Yes. So guys, past perfect tense का हम वहाँ use करते हैं जहाँ हमें ये बात करनी होती है कि कोई काम past में शुरू हुआ था और वो past में ही खत्म हो चुका था. तो इसका है से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट्स पास्ट. सो चुका था, चुकी थी, चुके थे. ठीक है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं पास्ट सिंपल के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. ठीक है, तो किसी काम से पहले क्या हुआ होता है, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल, और क्या हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. ठीक है, जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ खाना बना चुकी थी. ठीक है, जब मैं क्लास में पहुंचा, क्लास शुरू हो चुकी थी. तो हम ये ऐसे यूज करते हैं. इजी, आई होप. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड. Page not supported on this version. Oh my god. Guys, ये क्या हुआ है? एक भी पेज सपोर्टेड नहीं है. मैं सभी सोचूं ये सेशन कभी मेरे Class is over. पहले क्यों नहीं आया. So guys, give me some time. Let me change this topic or ask my team to look into it. तब तक please सब्र रखिएगा. Do not leave the session. I'll be back in a moment.
All right, guys. I have changed the lesson, so I'm sure now you could see practice session. सबसे क्लोज था तो मुझे ज्यादा ढूंढना पड़ता, फिर अगर और कोई टॉपिक होता तो इट्स अ प्रैक्टिस सेशन. प्रैक्टिस सेशन किस चीज का है? प्रैक्टिस सेशन लेट्स सी किस चीज का है. टेंसेस का होगा श्योर. So let's quickly start with the first slide. There is no explanation slide because it's a practice slide. आपको कुछ नहीं करना, आपको वही सेम जो आप एवरीडे क्विज करते हैं वही होगा. चूज द राइट ऑप्शन और चूज द राइट सेंटेंस, राइट, और फॉर्म आपके चुनिए. चूज द राइट सेंटेंस. लास्ट ईयर आई गॉन टू राजस्थान फॉर अ वेकेशन और आई वेंट टू राजस्थान. Easy peasy. Alpna, please answer. Yes, ma'am. Last year I went to Rajasthan for a vacation. Yes. Guys, you must have heard me saying this whenever we go somewhere and we come back from that place. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम been का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू. यहाँ पे हम जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है. गॉन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज और हैव के साथ यूज होती है, राइट. सो मैं गया था. द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस इज पिछले साल. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट बिकॉज पास्ट इज पिछले साल, लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर आई वेंट टू राजस्थान फॉर अ वेकेशन. मैं एक छुट्टी के लिए राजस्थान गया था पिछले साल. सो लास्ट ईयर इज शोइंग दैट द sentence is about past. Okay, this year होता तो यहाँ पे होता I have been. Okay, नहीं, this year के साथ went भी हो सकता है because इस साल past भी तो हो सकता है, ठीक है. So that's why we are using went. Been हम कहाँ यूज करते हैं? Been हम यूज करते हैं जहाँ हम जाकर वापस आ जाते हैं और उसके बारे में जब हम बात करते हैं, और हमेशा हम इसको भी has have के साथ यूज करते हैं. I have been to Rajasthan once. और अगर सामने से मुझसे क्वेश्चन किया गया when, so here I will say last year. Okay, मैं एक बार राजस्थान गई हूँ. आपने मुझसे पूछा मैम कब, तो मैं बोलूंगी last year according to the sentence. Taruv, you are raising your hand. I'm not getting what's the difference between went and have been. Okay. I have been to and I went. Present perfect is have been, past is went. Yes, ma'am. That's I know. But when to use that sentence and when to use went? Went गया था, been जाके आ चुका हूँ. मैंने वही बताया आपको. बीन हम वहां लगाते हैं जहां कहीं हम जाके वापस आ जाते हैं और हम तब बताते हैं कि मैं उस जगह एक बार गया हूँ, 2 बार गया हूँ, 10 बार गया हूँ, 100 बार गया हूँ. When we use went in this sentence, we also saying that we went to that place and came back from that place. No, it is not we came back. यहाँ पे बात हो रही है मैं गया था, तो वहां पे वापस कैसे आ गया? मैं गया था. अगर हिंदी में था है, ऑब्वियसली हम पास्ट की बात कर रहे हैं. आपको यहाँ पे अगर बीन लगाना होता तो यहाँ पे हैव आता है ना. सबसे पहली बात तो जाके आ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट. ओके मैम. तो बहुत सिंपल है, आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई काम जो पास्ट में. ये कौन बोल रहे हैं? मैम आई सौम्या. मैम हैड बीन भी तो लगा सकते हैं ना. भाई क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग मतलब बिल्कुल पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को मिला रहे हैं. सौम्या अभी आप रिसेंटली कहीं गई हुए थे ना? यस मैम. कहाँ गए हुए थे आप? माउंट आबू मैम. पूरा बोलिए. I went to Mount Abu last. अब यहाँ पे आप इसको I had been to Mount Abu लिख सकते हैं या I have been to Mount Abu लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपसे पूछा आप कहाँ गए हुए थे. यस मैम, नहीं लिख सकते. एग्जैक्टली.
तीनों ही सेंटेंसेस का यूज अलग अलग है, तीनों ही अब सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। आई वेंट टू, यहाँ पे मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में कभी भी टाइम मेंशन नहीं करते। आप लोग सब कुछ भूल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ऐसे टेंसेस है जहां पे हम टाइम मेंशन नहीं कर सकते। मैं ये नहीं लिख सकती आई बीन टू राजस्थान लास्ट ईयर। I have been to Rajasthan once. I hope you understood. Yes, both. ma'am. Moving ahead to the next slide. इन दोनों में से सही वाक्य चुनिए। I flied to Jaipur and then I took a train to Udaipur, और I flew to Jaipur and then I took a train to Udaipur. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आने भी पता होनी चाहिए। Anupam, please answer. I flew to Jaipur and then I took a train to Udaipur. Exactly. So guys, fly, flew, flown. These are the three forms of fly verb. Okay, fly, flew, flown. तो flied कोई verb ही नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जब भी हम इसमें ed लगाते हैं, कोई भी वर्ड जो y पे एंड होता है उसमें I आ जाता है। स्टडी में स्टडीड में y नहीं आता, I आता है। नहीं आता है y भी, वो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी सब में क्राई में आप लगाएंगे तो IED आता है, CRIED, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सचिन, जाहिद, इफ्तिखारुल, इजान, अल्तमश, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। So I flew to Jaipur and then I took a train to Udaipur. ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट है। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि पहले मैं प्लेन से जयपुर गया, फिर मैंने ट्रेन पकड़ी उदयपुर जाने के लिए। ओके, पकड़ी तो कॉट होता, मैंने ट्रेन ली, आई टुक अ ट्रेन। एनी क्वेश्चंस? The topic name is practice session, Karthik. Next slide. इन दोनों में से सही वाक्य चुनिए। I stayed at a hotel by the lake or from the lake. Which is the right preposition? By or from? Zahid back to back incorrect responses दे रहे हैं आप। BK Soumya, please answer. Ma'am, first one, I stayed at a hotel by the lake. Yes. So guys, by का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज के पास होते हैं उसे उसके लिए भी हम by बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं खिड़की के पास खड़ी हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम स्टैंडिंग बाय द विंडो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जो होटल था वो लेक के पास था, तो यहाँ पे हम by लिखेंगे, from नहीं यूज करेंगे। I stayed, past tense of stay, stayed, तो यहाँ पे at a hotel from the lake इनकरेक्ट है, बाय द लेक करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं माई होटल वॉज नियर फ्रॉम द लेक और वॉज फार फ्रॉम द लेक, ये जरूर हो सकता है, बट बाय द लेक के लिए हम जो यहाँ पे सेंटेंस यूज करें वही ठीक है। आई स्टेड एट अ होटल बाय द लेक, ओके। बाय द माउंटेन्स, बाय द बीच, कुछ भी हो सकता है, बाय द रिवर। एनी क्वेश्चंस? Yes, झील के पास। Choose the right sentence. I took a taxi and then I went to check the palace out, or I took a taxi and then THE and then, or THA and then, which is the right then? ये SK कौन है?
मुझे लगा आपने SRK लिखा है, मैं पूछने वाली थी कि आप कब से SRK के फैन हो गए. Okay, Gautam, please answer. I took a taxi and then I went to check the palace out. Ma'am, first one. THEN, then का मतलब होता है फिर, और THAN then हम जब यूज करते हैं जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, I am taller than my sister, which is true. ठीक है, so then वहां पे मैं लगाऊंगी THAN. यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, पहले मैंने टैक्सी ली, फिर मैं गया पैलेस को देखने, टू चेक आउट द पैलेस. तो यहाँ पे फिर वाला देन होता है THEN. I have taught you this multiple times when we were doing confusing words. That time also we learned, I think recently last week we were doing confusing words. That time also we learned the difference between THE and then, THA and then. Other words that we learned, it's, उसके बाद affect, effect, these were the words that we learned. I hope you remember, but यहाँ पे कुछ students हैं, they definitely did not remember and gave the incorrect response. Sujata, Tanishka, Satish, BK, Soumya, Asma. Right? अच्छा, Salman Khan. Okay. Next slide. Choose the right sentence. I was have dinner at a rooftop restaurant, or I had dinner at a rooftop restaurant. प्रताप जी, स्प्रिंग झरना भी होता है, और स्प्रिंग हम इसको भी बोलते हैं, जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत, वसंत को भी हम स्प्रिंग बोलते हैं. ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Who is 981842? Mahesh, is that you? Because the person is raising the hand. Please unmute yourself. चलिए, हमें डिस्कस करना है. कार्तिक, प्लीज आंसर. I had dinner at a rooftop restaurant. Yes, I had dinner at a rooftop restaurant. So guys, rooftop restaurant क्या होता है? जो छत पे जिनकी मतलब रूफ पे सिटिंग होती है, तो आप वहां पे जाके बैठ के आराम से खुले आसमान के नीचे अपना मील एंजॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द वेकेशन. तो मैं I had dinner, मैंने खाना खाया रात का, कहाँ? At a rooftop restaurant. So first option is incorrect because we are using was plus have, जबकि was के साथ या तो ing आता है verb में, या verb ही नहीं आता. Right? Ma'am, I had an experience with this rooftop restaurant. Once I went to a restaurant. It has both rooftop restaurant and normal room, so where everyone can sit. So I sat on the rooftop restaurant. Suddenly, means it rained. So I took. Rain is wrong. It started to rain. It started raining. Suddenly, it started rain. Then I took my plate in my hands and I came down. Means it's good if the weather is cool. Nice. Yeah. If it rains, we have to face some issues. Exactly. Right. So you can find many open roof restaurants in Uttarakhand, Himachal. But again, the problem is the cold. If it's a cold weather, then कोई बैठ ही नहीं सकता. Right. Moving ahead. Choose the right sentence. I went for a walk in the lake, or I went for the walk by the lake. Pratap, please answer.
इन दोनों में सही वाक्य चुनिए। आई वेंट फॉर अ वॉक बाय द लेक। अगेन गाइस, बाय का मतलब नियर बाय। सो मैं झील के पास वॉक करने गया। I went for a walk by the lake, not in the lake. पानी के अंदर कोई ऐसे वॉक करेगा, right? So in is incorrect. The preposition by is correct here. Next slide. कुछ लोग शायद करते हैं वॉक लेक में, इसलिए उन्होंने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दिया है। सचिन, राहुल, मनदीप, नेहा, रमा, प्रताप। Next slide. Choose the right option. While I was at the lake, suddenly the snow started falling heavily, or the snow started dropping heavily. So which is the right verb here? Dropping or falling? ये तो easy है, आप सबको पता ही होगा। Sajal. While I was at the lake, suddenly the snow started falling heavily. Falling heavily, exactly. So guys, snowfall, ये तो आप सबने सुना होगा ना? Snowfall, rainfall, fall, गिरना, आसमान से नीचे जब कुछ गिरता है या कहीं से भी, जैसे मेरे यहाँ पे मग रखा हुआ है, यहाँ से गिर जाएगा तो मैं से fall ही तो बोलूंगी ना, it fell। तो यहाँ पे हम fall बोलते हैं, dropping नहीं बोलेंगे, ठीक है? अल्पना, आप शायद अजमोल, अल्पना ड्रॉप पता था। What, Anupam? Rain drop and snow. We can use the drop for rain. No, Anupam, who told you this? Rain drop. Drop is boond. We can say here we are using dropping. So rain does not drop. बारिश की बूंदे को क्या बोलेंगे मैम? अरे भाई, बारिश की बूंदों को ही तो कह रही हूँ मैं, ड्रॉप बोलेंगे उसे। ड्रॉप या ड्रॉप्स तो वो वर्ब नहीं है ना, वो नाउन है। इसमें वर्ब नहीं है जी, ड्रॉपिंग वर्ब है, वर्ब नहीं यूज करना हमें। बूंद, बूंद इज अ नेम ऑफ समथिंग। अब मैं यहाँ पे पानी के अपने ऊपर अगर मैं पानी छिड़क लूं तो आप क्या बोलेंगे? मैम आपके फेस पे पानी की बूंदे हैं, तो वो आप यूज करेंगे ड्रॉप्स। बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप जरूर बोलते हैं, बट बारिश होने को हम रेनफॉल बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं, झरने को वाटरफॉल बोलते हैं, क्योंकि पानी नीचे ही गिरता है। तो ड्रॉपिंग इज इनकरेक्ट। ओके मैम। नेक्स्ट स्लाइड। चूज द राइट सेंटेंस। आई इमीडिएटली कॉल्ड अ टैक्सी और आई इमीडिएट कॉल्ड अ टैक्सी। एडजेक्टिव और एडवर्ब। Ice cubes, oh my god, Karthik, the word is hailstorm. Either you can call them hailstorm because वो hails होती हैं तो hailstorm आना। और दूसरा word होता है, I forgot the other word. ओलो को और क्या बोलते हैं? तो hail तो बोलते ही हैं, I forgot. छोड़िए। Sanjay, please answer. Sanjay, are you there? आपकी आवाज ही नहीं आ रही, I think. सुजाता? Yes, ma'am. I immediately called a taxi. Called is wrong. Called a taxi. Exactly. I immediately called the taxi or a taxi. एक taxi. For example, guys, वो जो इंसान था वो बेचारा डिनर कर रहा था और एकदम से क्या हुआ, नहीं वो वॉक कर रहा था। यस, डिनर नहीं, डिनर कार्तिक कर रहा था। ओके, सो आई वेंट फॉर अ वॉक बाय द लेक। वो इंसान वॉक करने गया
उसके बाद while I was at the lake, suddenly the snow started falling heavily. तेज स्नोफॉल होने लगी. अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली कोई ऑटो या टैक्सी लेंगे, और हिल स्टेशन पे ऑटो तो होते ही नहीं है. सो यस, आई इमीडिएटली कॉल्ड अ टैक्सी. The snowfall was very heavy. The driver tried his best not to lose control of the taxi. Or the snowfall was very heavy. The driver tried his best not to lose control of the taxi. So we have two loose here, LOOSE, and second is LOSE. One is noun, one is verb. Choose the right option. ये भी हमने पढ़ा था confusing words में, difference between lose and lose. सब भूल जाते हैं आप लोग, right? Sumit, please answer. Kumar, Sumit Kumar. Second one, the snowfall was very heavy. The driver tried his best not to lose control of the taxi. तो lose control, control नहीं छोड़ना, lose control. ऊपर वाला loose ढीला वाला है. My top is very loose. Your pants are very loose. ये वाला loose है. Do you have any loose change? Okay. तो second option is the right option. ठीक है. तो guys, if you have ever or driven in the, if you have ever driven in the snow or in the rainfall, simply when the roads are, you know, covered with snow or water, that time it is very difficult to drive because the roads are slippery and there is a chance that your car or your scooter or whatever you are using, whatever vehicle you are using, there's a chance to slip, right? So that's why the person is saying the snowfall was very heavy. बहुत तेज snowfall हो रही थी. Snowfall की हिंदी बर्फ पड़ रही थी. और जो ड्राइवर था टैक्सी का, उसने बहुत कोशिश करी कि टैक्सी का कंट्रोल ना खोए. सोचिए जरा सा कंट्रोल खो जाए और कहीं से कहीं जाके पड़ेगी टैक्सी. So it is very difficult. I remember when I went to Tirthan, you know, Tirthan, Jalori Pass, मैं ऊपर गई थी उससे भी. So we were, it was a time of the evening, the sun was setting, so we were enjoying the sunset, we were having tea and Maggie, and suddenly, out of nowhere, it was not even in the forecast, it started to snow. And we all were so happy because we were not expecting the snow. We were so suddenly started to snow, but then our driver asked us to leave as soon as possible, otherwise it will be very difficult for him to drive on the roads. And there were police officers as well, and they said if you do not leave now, you'll have to stay here because it becomes very difficult to drive on the roads when there's snow or water. So I still remember that our driver kept driving for half an hour without any stoppage. And after half an hour, when we were out from that place, when we reached somewhere where it was not snow falling, so he stopped there because the engine was completely hot. So we stopped there for around half an hour. We waited for the engine to cool down, and then we went to our cottage. So yes. Next slide. Choose the right option. I realized that I had left my wallet at the restaurant or left my wallet at the restaurant. Oh my God. The worst case scenario. In class 10, the Lanchos crop was destroyed by a hailstorm. Okay. I can digest. Taru, please answer. I realized that I had left my wallet at the restaurant. Restaurant, please. So guys, अब जब उसने टैक्सी कर ली, टैक्सी ठीक ठाक उसके होटल पहुंची होगी, जब पैसे देने का टाइम आया होगा, that time he realized that he left his wallet at the restaurant.
he had left यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, past perfect tense में छोड़ चुका था। कितनी बुरी बात है ना, अब वापस भी नहीं जा सकते, इतनी तेज रेन स्नोफॉल हो रही है। So second one is the right option. First में leaved है, leaved कोई verb की form नहीं होती, it's leave, left, left. जो स्टूडेंट्स इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों के वर्ब स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों को थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं लर्न, सो प्लीज लर्न देम। नेक्स्ट स्लाइड। चूज द राइट ऑप्शन। When I got my wallet bag, I noticed that my credit card had been stolen or my credit card had been stealed. यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? Tanishka, please answer. When I got my wallet back, I noticed that my credit card had been stolen. Such an awful moment, guys. जब उसे अपना वॉलेट बैक मिल गया, वापस मिल गया, उसे क्या नोटिस किया कि उसका क्रेडिट कार्ड किसी ने चुरा लिया था, तो उसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो चुका था, had been stolen. Yes, बेचारे का वॉलेट मिला तो कार्ड खो गया, इसे कहते हैं बेड ट्रिप। So stealed is not the second or third form of verb. Steal first form होती है, उसके बाद stole होती है और third होता है stolen. Steal, stole, stolen. Next. I hurriedly rushed to the police station or I hurried rushed to the police station. Adverb or adjective? Tarla, please answer. I hurriedly rushed to the police station. Yes, I hurriedly rushed to the police station. Karthik, my pro membership apostrophe S. And August 29 के बाद comma आएगा. The 3 dots is not the part of any punctuation. So August 29, comma, my pro membership's last day, full stop. I may not buy pro membership again, full stop. Next. Okay, so guys, hurried is adjective, nahin, verb, and hurriedly adverb. तो यहाँ पे हम adverb ly का यूज करेंगे, ना कि सिर्फ hurried बोलेंगे. Hurried, HURRIED. Hurried is not a word actually. Hurry is a verb. So hurried कोई word ही नहीं है guys. Hurry होता है और hurriedly होता है. चलिए, next slide. Choose the right option. I told the hotel that I will be able to make the payment unless I find my card, or I told the hotel that I will be able to make the payment provided I find my card. So guys, unless I find my card or provided I find my card. Very easy. इतने सारे students ने correct response मेरे पढ़ने से पहले ही. Very good. Sachin, Sidrameshwar, Thanos, Vishakha, Tanisha, Tanishka, Soumya. Thanos, please answer. Oh, I forgot. You do not. I told the hotel that I will able to make the payment provided I find my card. What is your name? I'm sure your name is not Thanos. You must be fan of Avengers. ये reveal नहीं करेंगे. Okay, so
गाइस मैंने अपने होटल वालों से क्या कहा, दैट मैं पेमेंट जब ही दे पाऊंगा जब मुझे मेरा कार्ड मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे आई विल बी एबल टू मेक द पेमेंट, मैं पेमेंट कर पाऊंगा प्रोवाइडेड, पेमेंट प्रोवाइडेड आई फाइंड माई कार्ड। ठीक है, अनलेस यहाँ पे कब यूज होता है, अनलेस यहाँ पे यूज होता आई टोल्ड द होटल दैट आई विल बी एबल टू, आई वोंट बी एबल टू मेक द पेमेंट अनलेस आई फाइंड माई कार्ड। अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्म होती विल नॉट, तब यहाँ पे अनलेस आता। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे अनलेस नहीं आएगा। ठीक है, What is the meaning provided? दिया हुआ, प्रोवाइडेड। In this sentence, ma'am? आई डोंट नो इन हिंदी, क्या नाम है तरूब? मैम इन हिंदी करते देखो प्रोवाइडेड ये यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, और कंजंक्शन हिंदी में तो इसे वही बोलते हैं शायद देना, मुझे नहीं पता, बट एज अ कंजंक्शन इसका मतलब है ऑन कंडीशन दैट, इस कंडीशन पर, इफ की तरह। ठीक है, तो अनलेस भी इफ की तरह यूज होता है, लेकिन अनलेस नेगेटिव के साथ यूज होता है। तो पॉजिटिव ऑफ अनलेस इज प्रोवाइडेड, Okay. दैट मिसिंग है, प्रोवाइडेड दैट होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, प्रोवाइडेड भी ठीक है। ठीक है, so I told the hotel that I will be able to make the payment provided I find my, provided that I find my card. ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है शायद कंडीशनल्स में, प्रोवाइडेड। मैं व्हेन नहीं होना चाहिए था, प्रोवाइडेड व्हेन आई फाइंड माय कार्ड। सो अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज करते तब यहाँ पे व्हेन आता, यहाँ पे हम इसे वर्ब की तरह नहीं, कंजंक्शन कनेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अनलेस की जैसे अनलेस भी ऑप्शन में दिया है, इफ यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब है इफ, अगर, इफ आई फाइंड माई कार्ड, मैं पेमेंट तभी कर पाऊंगा अगर मैं अपना कार्ड ढूंढ पाया। ठीक है, सो इफ और प्रोवाइडेड बोथ शेयर द सेम मीनिंग। Next slide. Choose the right option. The hotel told me that provided I make a payment, they would not let me stay. Or the hotel told me that unless I make a payment, they would not let me stay. Yes. वो इतने अच्छे थोड़ी आपको रहने देंगे। मुझे लग रहा होगा आप झूठ बोल रहे हैं। Very bad hotel. I believe, Karthik, this is the policy of every hotel. They do not entertain any guest if they don't pay. Okay. So yes. Vishakha, please answer. Yes, ma'am. The hotel told me that unless I make a payment, they would not let me stay. Now, guys, we have not. We have negative term. So that's why we are using unless. So होटल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं पेमेंट नहीं करता वो मुझे रहने नहीं देंगे। They would not let me stay. would यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। Easy? But ma'am, some hotels like ask money at the time of checkout, I think. Yes. So I think the person is checking out, I believe. That's why the person is asking. He's talking about staying in the hotel. Oh yes, nahi Karthik, you are wrong. They ask advance payment, full advance payment. If you go to any restaurant nowadays, they do not entertain anyone because वो क्या करते हैं लोग, क्योंकि घूमने फिरने निकल जाते हैं. For example, if you are going to any hill station, you will leave your bags and you will go out obviously. So they don't take chances because they must have seen that कि लोग अब पैसों की वजह से निकल ही जाते हैं, फिर वापस होटल आते ही नहीं है. So they ask full and final payment in the beginning, I believe. So yes, और यहाँ पे भी full and final payment की बात नहीं हो रही होगी, शायद एडवांस की ही बात हो रही होगी. Without advance, they will not give you any room. Of course, half of the money you have to provide before, and the rest of the money after. Okay. Next slide, guys.
and the last also. I called my friend up to seek his help, or I called to my friend to seek his help. Called my friend up or called to my friend. Zahid, please answer. I called my friend up to seek this help. Yes, so guys, here we are using call up. Call up हमारा क्या हो गया? Phrasal verb हो गया. Call एक ऐसा verb है जिसके साथ हम to नहीं लगाते. I am calling my friend, or I called my friend. तो to यहाँ नहीं लगता, so that's why the to वाला option is incorrect. I called to my friend is wrong. अगर यहाँ पे होता I called my friend तो ठीक होता. बाकी phrasal verb I called my friend up भी ठीक है. ठीक है, टू सीक हिज हेल्प. तो फाइनली जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड को कॉल किया उसकी मदद लेने के लिए. टू सीक, सीक हम मदद के लिए यूज करते हैं, सीक हिज हेल्प. नाउ ही विल विजिट टू दिल्ली पुलिस. दिल्ली पुलिस स्टेशन होना चाहिए यहाँ पे. एंड डीपी विल से हिम, से टू हिम होगा. we will write your report, but your wallet will not be found. So guys, ये था हमारा practice session on past tense. ये जो पूरी story थी होटल में रहने की, ये सारी हमारी past में थी. तो Sajal on top, very well done Sajal. Then Karthik, Gautam, Tarup and Alpana. Very well done. Ma'am, I answered all question. Only one answer was incorrect. Then I got 72 coins only. Yes, because of time, Anupam. There, आपकी जो स्लाइड चलती है ना, वो आपका टाइमर होता है. वो स्लाइड जब नीचे आती है ना, वो टाइमर होता है. तो जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे आपको 9 कॉइन्स मिलेंगे. उससे लेट करेंगे 8, उससे लेट 7. तो ऐसे ऐसे आपको कॉइन्स मिलते हैं और लास्ट में वो आपके कॉइन्स टोटल होते हैं. तो यहाँ पे टॉप पे हमारे पास साजल है. तो आज साजल ने जल्द से जल्द आंसर्स करे हैं सारी स्लाइड्स के. तो उनके टोटल कॉइन्स है 135. ठीक है, तो जो नंबर 1 स्टूडेंट है जिसने सबसे जल्दी आंसर दिए हैं वो साजल है और उनको 135 पॉइंट्स मिले हैं. ठीक है, सो यस, सो इसी के अकॉर्डिंग ये होता है. जैसे सेकंड टॉपर जो है उनके 127 है, फिर गौतम के 126 है, तरूप के 125 है. तीनों में एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, 765. और उसके बाद अल्पना लास्ट है 113 पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे होता है. मैम, yes मैम, if I have to say that आप पेमेंट पहले क्यों ले रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? Why are you asking for the payment beforehand? Why are you asking payment beforehand? For the payment. Why are you asking for the payment? Or why are you asking the payment? Or for the better. So यहाँ आप यूज कर सकते हैं. Okay, thank you, ma'am. Yes, Sajal, you are raising your hand. Could you explain me again that I have been? Where we use I have been? Sajal, I have been present perfect tense है. Present perfect tense में हम कभी भी टाइम नहीं बताते. अब आप एक ट्रैवलर हैं, मैं आपसे पूछूं where have you been recently? ठीक है, आप अभी रिसेंटली कहाँ गए थे फॉर एग्जाम्पल. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन जगहों पर घूमे हैं अपनी जिंदगी में, तो इसका मतलब मैं कोई आपको टाइम नहीं दे रही हूँ कि पिछले साल, इस साल, कल, परसों, तरसों. मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं हैव और बीन का यूज करूंगी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक तो तब यूज करते हैं जब हमें कोई रीसेंट एक्शन बताना होता है प्रेजेंट में, और उन कामों के लिए यूज करते हैं जिन कामों का हमें वक्त नहीं बताना होता कि ये काम मैंने कल किया था, ये काम मैंने परसों किया था, ये मैंने पिछले साल किया था, मैंने पिछले महीने किया था. नहीं, इन सब के लिए पास्ट सिंपल टेंस है. तो परफेक्ट टेंसेस में कभी भी हम टाइम मेंशन नहीं करते.
और जो यहाँ पे ऑप्शन था, जो फर्स्ट था, यहाँ पे वेंट था कि मैं गया था, मैं पिछले साल राजस्थान गया था। ये मैंने आपको बताया पूरा प्रैक्टिस सेशन पास्ट टेंस पर है। लास्ट ईयर आई वेंट टू राजस्थान फॉर अ वेकेशन। अब समझ में आया हैव बीन कहाँ यूज होता है? Have being, not been, is a being. Have been. Actually, स्पेलिंग ma'am, it's a confusing. B-I-N-G. You said na I have been or been. अरे भाई मैं बीन बोल रही हूँ, BEEN बीन। Okay. ING के साथ हैव कब से यूज होने लग गया? Actually, I'm confused बीइंग on that. होता है, बीइंग ह्यूमन नहीं कह रही मैं। Okay, ma'am. आपने क्या क्वेश्चन पूछा था मुझसे? Actually, like you said, na, in the beginning, I have been Rajasthan. आई हैव बीन टू राजस्थान, Yes. तो वो मैं BEEN वाला बीन बोल रही थी। Okay, ma'am. Okay, ma'am. आपको BEING वाला लगा? Yes, ma'am. That's the reason I asked you ING why के साथ why सिर्फ you am use are या been. was were यूज होता है या will be यूज होता है। Yes, ma'am. ING That's के the साथ reason has have नहीं यूज होता। yeah, that's the reason, ma'am. I'm confused that why you use been. दोनों की प्रोनाउंसिएशन ही अलग है। एक होता है बीइंग, ग का साउंड आता है, एक होता है बीन, न का साउंड होता है। कोई बात नहीं, हो जाते हैं कंफ्यूज। मैम मैं आपको क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्रीति सिन्हा। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय सेशन, इसके लिए आपको प्रो मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी। ये मैं काफी बार क्लास में बता चुकी हूँ। इफ यू वांट टू ज्वाइन my sessions, if you want to be a speaker, if you want to speak in the class, you have to buy pro membership। मैंने comment section में लिंक भेजा है, प्लीज उस पर क्लिक करिए। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। आप उसमें 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 साल का ज्यादा बेटर है लेना, क्योंकि वो सस्ता भी है और पूरे 1 साल तक आप जितनी चाहे उतनी क्लासेस ले सकते हो। मेरे अलावा और ट्रेनर्स की भी ले सकते हो, तो प्लीज आप वो लीजिए। और इसके साथ आप मेरा जो फर्स्ट नेम है अनमता, इसके साथ आपको 10 लगाना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन से। ओके I think in the first slide, on is a preferred choice. Maybe last year I went to Rajasthan on a vacation. On a vacation is fine, for a vacation. So on is छुट्टियों पर गया था, for a vacation छुट्टियों के लिए गया था। Both are fine, कार्तिक। The difference is the meaning only in Hindi. For means के लिए, on छुट्टियों पे या छुट्टियों पर। वैसे most commonly we use on. All right. Yes, Zahid, are you trying to say something? क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैम अगर जी अगर मैम अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाई वी शुड हायर यू, देन उसका आंसर मतलब कैसे, कितना वो मतलब कितना वर्ड्स में देना चाहिए, तो कितना कैसे बोलना वर्ड्स चाहिए? का तो मुझे नहीं पता जाहिद, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर देना चाहिए। आपको अपनी एबिलिटीज, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाहिए दैट आई एम वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दिस पोस्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं। और आई हैव, आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन दिस, जो भी आपका फील्ड से रिलेटेड है। तो वर्ड्स का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप जितना चाहे उतना लंबा आंसर इसका कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कोई लिमिट नहीं होती कि आपको एक आंसर सिर्फ 2 लाइनों में या 3 लाइनों में देना है। आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है, जितना एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को उतना अच्छा है। कम वर्ड्स में आंसर करना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जाहिद? So guys, that is all for today, and I'll see you in my evening session. Please join on time and please join regularly. बहुत से students हैं जो evening session बिल्कुल join नहीं करते. Please join that session and have a great
Good afternoon, all of you. Am I audible? Krishna Pathak, Pratap, Neha, thank you for joining. Is my voice audible here? It's very, very heavily raining. I don't know for how long I can stretch. My Wi-Fi is very strong right now, but I can't see the lights go off. So here, Pratap and Krishna, just Pratap, Krishna and Neha, just tell me, are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, Krishna. Yes, clearly. Great, thank you so much. And all the students who were posting good afternoon messages, yes, I was seeing all your messages on the chat box there. So good afternoon from my end as well. As you can, I think you can hear the rains. It's heavily raining here. And I'll try to be more loud so that you are able to hear me, understand about the third degree of the adjective, which we did yesterday. It's a rollover class. A rollover class means there was one part which did yesterday, and this is the next part which we are going to do today. So what are we going to learn today? We are going to learn some little advanced understanding of using an adjective. I hope everybody is aware of the adjectives. I'll just discuss with that. But hello, Mamta, Manoj. Mamta, very, very good afternoon. Thank you for joining there, Tehveen. This is Tana, Musaram, Manoj, Ika, Saika, Asma, Ramakrishna, Dasari, this is Balsaha Pujari, Narendra, Samas, Fatima, Samrat, yes, Nitin, Supriya, Lakshman, Shamas, yes, Shamas, hello, how are you doing? Yogesh, Pavan Patel, Ramesh, Usma, no ma'am, it's very hot today in Pakistan. Usma Khan, it's very, it's raining, it's breezy, it's windy, it's dark clouds, and it's damp atmosphere, and it's raining like very heavy rains. Okay, so but that's what is happening here in India. Okay, so we continue with the class there. Altanosh and Prachi Patel, good afternoon. Thank you for sending me, Mahendra Singh, that good afternoon message. Let's get started. Please place your notebooks and pads, notebooks or any pad that you are looking for writing, and of course pen is must. Keep that with you. Let's get started. If you remember, I was talking to you yesterday about adjectives, right? Just a clear and a quick thought there about the adjectives. Adjectives basically describe, emphasize, give more meaning to a noun or a pronoun. For example, Veena is wearing a blue shirt. So who is wearing a blue shirt? It's Veena who's wearing. And what is Veena? Veena is the subject here. And Veena is not only the subject, but she is a noun here. You can also say that she is wearing a blue shirt. So that is a pronoun that is used in lieu of noun, which is she here. So we are trying to say that the blue color is actually about who? It's actually about emphasizing the noun, telling more specific details about a noun. हमने आपके साथ में एडजेक्टिव्स की बात करी थी और इस एडजेक्टिव्स में हमने ये देखा था कि हमारे साथ में अगर हम नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी को भी किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में हम बताते हैं, उस पर एम्फसाइज करते हैं, वो जितने भी शब्द होते हैं ना, वो सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव्स में आते हैं। आज एक और एडिशंस को सीखिए। नाउन्स के साथ में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दोनों एक काम करते हैं साथ साथ। मतलब एडवर्ब्स बेसिकली होते वर्ब्स को डिफाइन करने के लिए हैं, वर्ब्स को बेटर करने के लिए, वर्ब्स में बहुत इंफॉर्मेशन डालने के लिए एक्स्ट्रा। बट एडवर्ब्स जो होते हैं ना, वो एडजेक्टिव्स में भी एडिशनल मीनिंग्स को डालते हैं। So what am I trying to add on a little extra detail for all of you here is that today we are going to learn about adjectives, the superlative form. And in these adjective sections, there is one more additional part that you should understand and learn here is that adjectives are defining more, like
Like there are some additional aspects also defined there. So even the adverbs are helpful in defining adjectives, like further defining a noun. दोबारा से समझाती हूँ. एक noun है, उस noun को तुमने define किया तो वो adjective कहलाता है. अब तुम्हें उसको और define करना है तो वो काम adverb भी कर सकता है. Adjective हम 4 शब्द 5 शब्द के लगा सकते हैं, no issues there. But हम adverb का भी इस्तेमाल कर सकते हैं to denote and define my adjective there. Adjective किसको define कर रहा है? Noun को define कर रहा है. ये है एक learning आज की. और दूसरी learning, the other learning that today we are going to do is we are actually talking about comparison in adjectives. हम क्या कर रहे हैं आज, हम समझ रहे हैं कि जब हमें तालमेल किसी में बैठाने की कोशिश करनी पड़ती है, या कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, कौन उससे बेहतर है, जब इस तरह की चर्चा हम करते हैं या अपनी बात को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है ये मोबाइल इस मोबाइल से बेहतर है, नहीं वो वाला तो सबसे ज्यादा अच्छा है, राइट? So what do we do? हमें sometimes we are supposed to sit down and do a comparison there. Whenever we do comparisons, the comparisons will always have 3 forms of it: positive, comparative, and superlative. These are supposed to be the 3 degrees of adjectives. So if you have placed, if you still have the same notepad which you were using yesterday, I asked you to leave the 3rd line. I asked you to make 3 lines there. The first was for positive word there, second was for the comparative word there, and third, today we are going to fill the 3rd part, which is the superlative degree. Now, when I say it is hot, okay, when I say it is hot, so the word here, HOT, is referring to the subject it. It is here is talking about something which is happening in the present state there. So it is hot. So what is hot? It is hot. Hot is supposed to be the positive word. It is hotter than yesterday. So we did comparative and we understood yesterday that comparative will happen between 2 situations, 2 people. There has to be 2 conditions there. Okay. So what did we say? What did I say right now? It was hotter yesterday than, or it is hotter than today. So what did I use here? Instead of hot, I used hotter. HOTTER. You remember we used ER, right? And then we used the word THAN. So yesterday we had learned that when we are doing the comparison kind of a thing, we have to connect with that ER and then word there. Today is the hottest day of the month. So we are trying to say HOTEST. EST defines the superlative form, that in the whole month, in a group of the days, in a wholesome part there, when I pick up something singular, I say, or pick up something unique, something special, I say, oh, today was supposed to be the hottest day of the month. So I am doing a comparison in a group, in a whole. And when I do a comparison in a whole, that falls in the category of superlative. For example, I say, Prabhat is the most intelligent child in the class. When I say Prabhat is more intelligent than Veena. When I say Prabhat is intelligent, what did I do? I used intelligent, I then used more intelligent, and then I used most intelligent. More, most, I used intelligent, more, and then most. I can also say she is good, but Fatima is better. I think Tarla is the best. So what did I do? Good, positive, better, comparing between 2, and best is out of all the pro members that we have. Getting the point? That means when I talk about in a group, in a class, in wholesome, I am able to define for one particular thing in the section of our superlatives.
Let's get started. Today the slides are long. I'll be not too much into explaining the question answers, like we have the slides and you answer that, because there are other explanation slides today. So if I finish that on time, I would surely like to come back on that slide if anybody has a query. So just keep that slide name, not the name, the number with you, so that we can come back and discuss if there is any query anybody has. तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. उस पेज में अगर आपको कोई सवाल रहता है तो उस पेज का आप कहीं पे लिख लीजिएगा. आज एक्सप्लेनेशंस थोड़े ज्यादा हैं, वो अगर टाइम से खत्म हो जाएंगे तो मैं वापस उस पेज पे आऊंगी जिस पे आपका सवाल होगा. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. We've already started, but this was related to the slide. सबसे लंबा, सबसे अच्छा, these are superlatives. All right. राजस्थान is hot. राजस्थान गर्म है. Rajasthan is hottest state in India. Now this is supposed to be a, let me tell you one thing. See, we have different kinds of sentences. कई बार लोग पूछेंगे, अभी मेरे सवाल केवल दिखाने पर ही पूछ लेंगे, बिकॉज मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि सुपरलेटिव्स कैसे हैं, इसलिए अभी एक और एडिशन एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि उनको लगेगा मैम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया. बिल्कुल सही जवाब है. देखिए, हमारे जो वाक्य होते हैं वो अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक हो गया स्टेटमेंट है, सोशल स्टडीज की किताब में लिख दिया गया कि राजस्थान जो है वो हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया है. ठीक है, लेकिन जब मैं बातचीत कर रही थी अमरुक शिल्पी के साथ में, तो मैंने उसको बोला तुम्हें पता है राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट. इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, सो व्हेन आई से स्टेटमेंट, I express it in a manner where I'm not trying to emphasize it in a statement. But when I'm trying to emphasize it in an imperative form, there I can say that, you know, it's the hottest state in India, and then put an exclamation mark there. It's nothing wrong. When I use my superlative degrees, it depends as to what kind of way I have to express. अब जब मैं अपनी सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करती हूँ तो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से बोलना चाहती हूँ. हो सकता है कि मैं सिर्फ एक वाक्य के रूप में बोलना चाहती हूँ. वाक्य का मतलब है कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, कल बहुत ज्यादा धूप होने वाली है, तुम्हें पता है कल बहुत ज्यादा धूप होने वाली है. कहने के तरीके पे फर्क है. उसी हिसाब से हम हमारे सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो हमारा एडजेक्टिव सेक्शन है, जैसे आप यहाँ हॉट देख रहे हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है राजस्थान इज द हॉटेस्ट. दैट मींस हॉट के बाद हमने कल कंपैरेटिव किया था, हॉटर आ जाता है, सुपरलेटिव में आता है हॉटेस्ट. तो मैं यहाँ पे इज हॉटेस्ट भी लगा सकती हूँ, इज द हॉटेस्ट भी लगा सकती हूँ. दैट मीन्स कि हिंदुस्तान के 29 स्टेट्स में से, ओवरऑल इंडिया के 29 स्टेट्स में से सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, राजस्थान. सो सुपरलेटिव्स क्या करते हैं, एक ग्रुप के अंदर पूरा एक सेक्शन ऑफ ग्रुप, टोटल इन टोटलिटी, उसमें से जो बेस्ट होता है वो इस्तेमाल में लिया जाता है. दैट इज सपोज्ड टू बी द सुपरलेटिव सेक्शन दैट वी यूज. अब यहाँ पे है प्रोनाउन. हमने यहाँ पे क्या लिया था, राजस्थान नाम लिया था, which is supposed to be a proper name. So we had a noun which had a proper name. Here we are saying she is short. वो नाटी है. She is the shortest girl in class. वो हमारी कक्षा में सबसे नाटी लड़की है. Short, shorter आएगा बीच में, and then shortest. So short क्या है, बेस रूट वर्ड जो बनाया गया है लैंग्वेज जब हम लिख रहे थे. जब लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जब उस पर काम किया गया, तब ये वो शब्द हैं जो बेस फॉर्म है. So what is short is supposed to be the root word there. We have the comparative word by using er, which is shorter, and now here we are using the superlative degree, which is est, shortest. So what did I do? I added with short est to change it into a superlative form. Very good afternoon, Srinivas. You came late in the class. Initial explanation was done. किसी भी विशेषण शब्द का सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए अंत में est लगाते हैं. विशेषण क्या है, एडजेक्टिव.
So there is an adjective. How do you define adjective? Adjective are just words. Let me just tell you. ये सब शब्द होते हैं. आपको सबसे पहले ढूंढना Yes, है. ma'am. आपको सबसे पहले ढूंढना है कि आपके पास में सब्जेक्ट क्या है. जिस दिन आप इस लॉजिक को समझ गए, the day you understand that I am trying to talk on a particular subject, rest parts of speech will fall one after another. It is not at all difficult. When I am talking about the tricolor flag of India, I'm talking about tricolor or I'm talking about flag. I'm talking about the colors which are there in the flag of India. So these are, you know, such kinds of what we say sentences which might appear to be very confusing. But the day you understand subject, it will be easy. So here, what am I trying to say? The subject, focus on it, see the word which is emphasizing or giving more meaning to it, pick up that word, and that word is going to be your adjective. Now, if it is supposed to be talking in only about an individual, you take the positive word. If it is positive adjective, if it is trying to compare, take the comparative adjective, use then. If you are talking about trying to figure out in a class, in a group, then you have to use the superlative form. Now, the only rule is not just adding in the root word est. There are other rules as well, which I'll be shortly coming along the way. She is pretty. Look at the word there. वो सुंदर है, वह सुंदर है. अब कौन सुंदर है? वह सुंदर है. तो तुमने किसकी विशेषता दिखाई? वह की विशेषता बताई. तो ये जो विशेषता दिखाने वाले शब्द होते हैं, ये शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर, विशेषण में आते हैं. ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की विशेषता बता रहे हैं. अब वो किसकी बता रहे हैं? एक की बता रहे हैं. शी की बताइए, एक की. लेकिन जैसे ही बोला ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो वो प्रिटी से कहाँ चला गया? प्रिटीएस्ट चला गया. लेकिन अगर मैं कहती कि वह उससे ज्यादा खूबसूरत है, तो शी इज प्रिटियर देन हर, whatever the name, the person of. So she is prettier than her. You never know the person, but she is also there and her is also there. Prettier word is telling me the comparative. So इस बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब आप एक जने की बात करें तो आपको पॉजिटिव लेना है, प्रिटी, PRETTY. फिर से स्पेलिंग्स पे थोड़ा ध्यान दो. शॉर्ट जो था उसमें EST जुड़ेगा, लेकिन यहाँ सुपरलेटिव में Y को ड्रॉप करोगे और Y को ड्रॉप करो. और IEST स्पेलिंग आप टाइप नहीं कर सकते, रीड करके आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप लर्निंग प्रॉपर नहीं करेंगे. आज काफी ज्यादा जगह इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. यस, Harish Kumar, thank you for joining. Yes, Altamash, continue to write short, shooter, shooters. Now look at that spelling there. Short है तो SHORT है बेटा, वो रूट वर्ड है. उस शब्द का अल्फाबेट मत खाओ. और शॉर्टेस्ट है तो SHOR ही आएगा ना वहां पे, TTST. So just check your spelling there. Okay, let's go to the next. अब ये तीसरा तरीका है. पहले में हमने क्या किया? दोबारा से ध्यान दे दो इसके ऊपर. पहले में हमने क्या किया? रूट वर्ड था, बेस वर्ड था, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? EST. सेकंड में हमने क्या किया? एक ऐसा एडजेक्टिव मिलेगा, एक ऐसा आपको फॉर्म सेक्शन में मिलेगा जहां पे Y लिखा हुआ होगा एडजेक्टिव में, उसको ड्रॉप करो और IEST के साथ उसको जोड़ दो. This is for English learners. What did we do? We took the base form short, we added EST, right? Now there is an alphabet, there is a adjective which ends with a consonant Y. We drop the Y and we add EST. But you know, there are some rebellious kind of adjectives also. I use these words rebellious. I have given a different word for you which I'll share with you in the last, but here this is supposed to be a rebellious adjective, like intelligent. You cannot do it. Intelligent test, EST, you cannot add it. You cannot add IST here. You have to add an extra word by saying she is the most intelligent girl in the class or boy in the class. So what am I doing there? Now, if I say she is more intelligent than her brother, then again it's a comparison. So we have 3 degrees. I'm telling again and again. First is for the singular. Second, comparative is between 2. And the superlative 3 is between a group there.
And what do we do there? We are supposed to use ER and then with the comparative. But today we are talking about superlatives. So we have three ways of making it. One is we take the base form, add ER, add EST there, short, shortest. Second is we are trying to have pretty, drop Y, any word it is which has Y, drop Y and put IEST. Then we have these rebellious kinds where we have most being used with the base form of the word. Yes, again coming to the first thought which I said, I can say he is most intelligent boy in the class, nothing wrong, but I can emphasize by saying it that he's the most intelligent boy in the class. So these are some ways that you should learn how to emphasize on your adjective sections there. Please come forward and continue to participate. वह हमारे ऑफिस का सबसे जवान कर्मचारी है. Yes, Sudodip, thank you for good morning. Oh, sorry, hello message there. Alpana and Tanishka, great to see there. Fatima, आपको क्या हुआ एकदम से? वह हमारे ऑफिस का, देखिए जब कोई नई चीज आती है ना तो जल्दीबाजी मत करिए. प्रताप ने बहुत अच्छी चीज सीखी है. मेरे को पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आप लोग भी वही करने की कोशिश करें. Okay, Alpana, please come forward and tell me the correct answer, please. Yes, ma'am. He is the youngest employee in our office. Is the youngest? Yes, absolutely. He is the youngest employee in our office. Absolutely correct. Tanishka, Mamta, Krishna, Tarla, and Ashmol have also given us the correct answer. My dear Pratap, please come forward and tell me क्या गलती हुई. आपने last ले लिया था. youngest से देख लिया मैंने, more नहीं देख पाया. हाँ. खाली youngest पे ध्यान दिया, इसमें youngest पे. Third वाला प्रताप. हाँ, थर्ड वाला क्लिक कर दिया, मैं करना था सेकंड. हाँ, अब एक बात और समझो. Yes, ma'am. सेंटेंस को जब पढ़ते हो ना प्रताप, it's not only for Pratap, it's for everyone. I'm giving this tip. कभी भी हेलो इंग्लिश की, जब हेलो इंग्लिश नहीं, कहीं पर भी आपको अपना सेंटेंस काम में लेना है ना, anywhere if you have to use the sentence, there is a very small trick. When you frame the sentence, you are emphasizing on what. जब भी आप किसी को कोई बात कहना चाहते हो ना, तो किस बात पे एम्फसाइज करते हो, या किसी की बात सुन रहे होते हो तो किस बात पे आपका जोर होता है. मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो क्या कहना चाहता है, यही रीजन होता है ना. अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो आप सुनना चाहते हैं कि मैम क्या कहना चाहती हैं, हम ध्यान से गौर से सुनते हैं. आप देखेंगे कि कुछ शब्दों के ऊपर थोड़ा जोर, ऐसा भारीपन सा महसूस होता है जब हम सुनते हैं. स्पीकिंग एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, वही पकड़ लीजिएगा, वो एडजेक्टिव होगा. तुम इतना जोर से क्यों बोलते हो? बोलना, जोर. बोलना क्या हुआ? वर्ब हो गया. और जोर का आपको जवाब दिया तो वो एडवर्ब पकड़ में आ गया. हाय कितनी सुंदर लड़की थी. सुंदरता किसके साथ जोड़ी गई? लड़की के साथ में. कितनी एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में जाएगा या नहीं? कितनी सुंदर, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ गया. तो भावना के साथ में with the feelings, if you understand the sentence, it will be easy for all of you. यंग है, अब आपने जब सेंटेंस यहाँ से पकड़ लिया तो यहाँ भी लास्ट एक और समझ लो प्रताप, एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया, ठीक है, और उसके जस्ट बाद आप देख रहे हो जब एम्प्लॉई वर्ड लिखा गया ना, उसके पहले ही एडजेक्टिव्स को फॉर्म लगाया जा रहा है. तो पूरा पढ़ने की बजाय बेटर है सीधा उस पर ध्यान दो कि अच्छा एम्प्लॉय है, यंगर है, यंगेस्ट है, यंगेस्ट है, यंग है. तो जो यंग है वो तो बाहर हो गए, यंगर है वो भी बाहर हो गया, यंगेस्ट है. अब मैम ने बताया है कि मोस्ट भी हो सकता है, वहां पे IEST भी हो सकता है, राइट, और सिंपल EST भी हो सकता है. वहीं पे चेक करो उसको, फास्ट होगा. वह कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है. आरती पटेल, यस. He is, yes. Diksha, I think you have missed the T there. I think वो लिखते समय मेरे से भी हो जाता है. Mamta, yes. Thank you for learning there, Mamta. Thank you so much. That's the way I really want you to practice it. Yes, Fatima, please come forward and read this out. Alpana, Pratap, Pratim, Akanksha, and Pari have given us the correct answer. Fatima. Yes, ma'am. वह कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है. She is the prettiest girl in the class.
is the prettiest girl in the class. Thank you, Fatima. Thank you so much. Tarla, please come forward. Jaldi se aao. Yeah, ma'am. Tarla, can you give me the 3 forms of adjectives with the root word here of adjective? Pretty, prettier, prettiest. Okay, can I get the spelling? P-R-E-T-T-Y, pretty. P-R-E-T-T-I-E-R, prettier. And P-R-I-T-I-E-S-T, prettiest. That really calls for a shabashi from my side, Tarla. Very good. Thank you so much. I think all of you understood the 3 sections there. Okay, great there. Just a second, please. Okay, let's go to the next. Come. सबसे जल्दी का अपॉइंटमेंट 8 बजे का है. सबसे जल्दी का अपॉइंटमेंट 8 बजे का है. Okay, I could see Sapna Kumari, Altamash, Rhythm. How are you, Rhythm? Where have you been for so long? Correct answers there. Aarti Patel, yes. Altamash, correct there. Shama Zia, correct answer there. Very good. Kushal Kumar, thank you for joining us. Mamta, very good. Mamta, that's the right way to learn things. Sapna Kumari and Altamash, I'm taking Sapna Kumari's and Altamash answer. Absolutely correct there. Correct answer there, both of you. Krishna Reddy, are you with me? Yes, ma'am. Krishna, no, it's not Reddy, I'm sorry. Krishna Pathak, please come and read the sentence, please. Yes. The earliest appointment is at 8 o'clock. Absolutely. So, iska root word kya hua earliest ka? Early. Comparative? E-A-R-L-Y. Comparative? No, that's okay. Earlier. E-A-R-L-E-R. Y-E-R. Sorry. Last में E-R. हाँ. Yeah. एक बार दोबारा ये word बोलना. ये पूरा sentence मैम. Adjective. अच्छा, okay. Earlier. Okay. Earlier and earliest. Okay. Earliest, earlier and okay. Great. Fine. Thank you. Thank you so much, Krishna. Great going there. Okay, let's come to the next. हम कक्षा के सबसे बुद्धिमान छात्र हैं. Oh ho. I think the earliest. Okay, Aarti Patel. Continue. Early, earlier, earliest. Very good, Mamta. Altamash, great there. Keep learning, children. Please keep learning. Pratim, Tarla, Fatima, Krishna, Alpana, Nitin. Aajao, Pratim. Please come forward. Yes, ma'am. We are the most intelligent students of the class. Do you say this? Yes, ma'am. Okay, so if I have to say that Pratim is the only intelligent child we have, so what sentence can we draw for Pratim? For Pratim, मतलब मुझे ये कहना चाहती हूँ कि Pratim खुद कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ इस क्लास का, तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? Ma'am, I am the most intelligent student of the class. नहीं, अभी तो केवल खुद ही की बात करो. जैसे आप बोलोगे I am intelligent. ठीक है, पॉजिटिव वर्ड काम में लिया. अब इसको कंपैरेटिव करने में कैसे करोगे Pratim? Ma'am, I can't hear you, ma'am. हाँ फातिमा, तुम्हें नहीं लगता कि ये टीचर के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए होंगे? कल आए थे ना तुम क्लास में बेटा, कंपैरेटिव करना है तो मोर लगाना पड़ेगा ना. तुमने इंटेलिजेंट के साथ में मोस्ट लगाया है तो है ना, तो घबराओ नहीं. ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे घबरा के भागते नहीं है. ऐसे बोलो that ma'am it is I don't know, I forgot, I'm sorry, you caught me red handed. ऐसे बोलो, बेहतर है. Always accept, करना नहीं कभी Pratim. So it's like Pratim is more intelligent than Krishna. More intelligent. When I say Pratim is the most intelligent, that means it's in a group. तुम बेटा अभी स्कूल में ही हो, तुम्हें तो बहुत जरूरी है ये चीजें याद करना. चलो, let's go to next. आ जाइए, come. Earliest. Yes, Sapna Kumari, shabash, very good. Continue learning there. Aarti Patel, Sapna Kumari,
And so proud of all these, both the girls working there. Very good, Mamta. Intelligent, more intelligent. We are the most. Altamish, Shamas, everything. Very good. Prabhat Tiger, great there. Yes, ma'am. किस बात के लिए प्रभात? I am more intelligent. Sapna Kumari, Pratim, Alpana, Krishna, Nidesh, Rhythm is also there with me. Oh ho. My dear Tanishka, Tarla, Fatima, इसमें क्या हुआ बेटा? आ जाओ जरा तीनों आ जाओ. जल्दी से आ जाओ please. All the three girls, Tanishka, Fatima, Tarla. हाँ बोलो क्या हुआ? I chose first one. Ma'am, first one. Yeah, I'm also choose the first one. अच्छा, you also choose नहीं बोलेंगे. Chose. So देखो सुनो मेरी बात. इसलिए क्यों आप तीनों को पता है confusion क्यों हुआ? गलती आपकी बिल्कुल नहीं है. आप अपनी जगह तो सही चूज कर रहे थे क्योंकि वहां मोस्ट लिखा हुआ था. आपने सोचा यही होगा, राइट? लेकिन होता क्या है, जब तक हम अपने आंखों के आगे ये सुपरलेटिव्स, कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स के शब्दों को नहीं देखेंगे ना, ऐसी गलतियां हमसे होती रहेंगी. Getting my point? So most of the time, what you need to do today, I'll rather say do it today itself. Sit down and allow your eyes to go through these words. Okay, if it is a word heavy, H-E-A-V-Y, इसका मतलब इसका comparative degree और superlative degree में heavy, heavier और heaviest होता है. लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना stupid word की, तो stupid, stupidier और stupidiest कोई शब्द नहीं होगा. This is my learning for understanding कि क्या मेरे पास इसका ingredient है या इसके ingredient में second form पे मुझे काम करना है. आप मेरी बात समझ रहे हो? Stupid है तो she is more stupid, she is the most stupid girl in the class. So यहाँ मुझे more और most लगाना और फिर वो आ जाते हैं तीसरे rebel वाले. तो इसलिए थोड़ा सा आंखों के आगे से इन शब्दों को निकलने दो. ये गलती नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है. इट्स ओके. आज वो अभी हुआ है, देखो आगे नहीं होगा. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. दिस इज द इजी एग्जांपल फॉर यू, आई थिंक. ओके, नाउ दिस इज तनिष्का. द वर्ड टॉल. टॉल का हमेशा हमारे पास में टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है. तो मोस्ट और मोर तो है ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है. ऐसे तनिष्का इज टॉलर देन तरला, तनिष्का इज द टॉलेस्ट, तनिष्का इज टॉल. So I have all the three forms there. So Neha is the tallest player in her team. धीरे धीरे हम याद कर रहे हैं. So it's perfectly. पहली बार आया है, गलतियां होंगी, हम सीख रहे हैं. But proud to see that Pratim, Pratap, Alpana, Krishna, Fatima and Santoshi have given us the correct answer. Please come forward and give the answers there. Yes, Mamta. Very good, Mamta. Shabash. Shalini is the heaviest girl in her class. Okay. This is supposed to be Altamish. Second one, taller. I got the answer there. So we have here Srinivas. Please come forward and read this for me. Aishwarya has the most beautiful eyes on earth. Absolutely. So she is the most beautiful woman on earth because that's supposed to be, she has got some title there. And now we are talking about her eyes. इससे ज्यादा आंखें किसी की खूबसूरत नहीं हो सकती. अब देखो, जब हम कहते हैं ना ऐश्वर्या हैज मोस्ट ब्यूटीफुल आईज ऑन अर्थ, तो थोड़ा सा हल्का सा हमारे कहने के भाव में उतना प्रेशर नहीं जाता है. So when I don't use the article the in this particular statement, what happens that emphasis is not there, that the kind of push that is required to tell my feeling to the other person. Oh my god, she's supposed to have the most beautiful eyes in the world. So when I say the, it gives a strong pressure there. Did you hear me? I didn't even say loud, and I was actually trying to do, Yes, oh my god, she's supposed to have the most beautiful eyes I've never seen. So use of the article, because yesterday also Srinivas, we were talking about articles only, emphasize. It's just the way we use our skills of how I need to say about my expression there. So Mercedes, okay, why am I reading? Sorry. What do you mean by saying that, Ajmol Hussain? Ma'am is the heaviest teacher on Hello English. You're talking about my weight?
Ajmol, type that. I am so glad to hear that you had the guts to write that. Wow. So Ajmol, just type and tell me you're talking about what. I am heavy. What to do? I'm really working out these days to put my weight down. Can't help it. Pratim, Tanishka, Fatima, Alpna, Krishna, and Prabhat have given us the correct answer there. Yes, Pratap, please come forward. Yes, ma'am. Mercedes is the fastest car in the race. कौन सी रेस की बात हो रही है? रेस लगाते हैं ना दौड़ने वाले, कारों की दौड़ होती है, मर्सिडीज कारों की दौड़, मर्सिडीज। इसमें पता है क्यों पूछा मैंने आपको? पता है RACE रेस जो शब्द है ना, ये इंसानों के कैसे समझाएं आपको, क्वालिटी की बात करता है। रेस, देयर इज लॉट ऑफ रेसिज्म। रेस सुना है ये शब्द आप लोगों ने? इसलिए मैंने थोड़ा गौर देने के लिए कहा कि उस शब्द को पकड़ो कि डिफाइन क्या कर रहा है, वो उसको आपको रीड करना पड़ेगा। ये सुपरलेटिव की बात नहीं थी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात थी। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड ट्राई दिस आउट। आज सबसे ठंडा दिन है। Continue, Sapna Kumari, continue all of you. Tanishka, where are you from? Rhythm Kaur. I expect you to come on the top, so don't look here and there. I want the best to come. Aarti Patel, the fastest, 3 fastest. Continue, you are looking beautiful, ma'am. Like ma'am Santoshi Kumar, thank you so much. I am okay. I'm very, very normal. Okay, but I really get tired because this is the 3rd class since morning. That's the only thing that I am completely offbeat when I am with your class. Rassi nahi hai, RACI hai. Rhythm, great. Thank you for that okay message. Fatima, Pratim, Pratap, Pari, Rhythm, Baljit. आज सबसे ठंडा दिन है. Srinivas, please come and answer. Srinivas. Sorry, ma'am. You don't know the answer? नहीं पता ना Srinivas? हाँ ना तो बोलो. Yes, ma'am. You know the answer or not? No, ma'am. No. Okay, देखो आओ मेरे पास, आओ just say yes or no. देखो, it's written there आज सबसे ठंडा दिन है, and I know you have a little issue with Hindi, right? Srinivas? Yes, ma'am. I know. आपको हिंदी में दिक्कत होती है ना? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हिंदी में दिक्कत नहीं है तो ऐसे समझो, यहाँ लिखा है आज, लिखा है आज को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? टुडे। टुडे इज मोस्ट कोल्डेस्ट डे। हाँ, टुडे इज मोस्ट कोल्डेस्ट डे की जरूरत नहीं है। मोस्ट क्यों लगाओगे जब कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट है ना हमारे पास? यस, है ना? इसको समझो। देखो अभी आपको वो वाली सेक्शन को समझने में वक्त लगेगा, पहले ट्रांसलेशन समझ लो। शब्द क्या कह रहा है? आज, सॉरी वाक्य क्या कह रहा है? आज सबसे ठंडा दिन है। पहले तो इसका टाइम बताओ, टेंस बताओ क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? आज का प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो है प्रेजेंट सिंपल है ना। अब यहाँ पे आज क्या होगा अंग्रेजी में? टुडे। टुडे है क्या होगा? इज। अब सबसे ठंडा, ठंडा अंग्रेजी में क्या होता है? कोल्ड। हमें भी पता है ठंडा कोल्ड है। अब यहाँ चूंकि सबसे लिखा है ना, है ना, तो मतलब क्या हो गया? ये सुपरलेटिव फॉर्म है। सबसे मतलब कोल्ड का कोल्डर और कोल्डेस्ट शब्द लगाना है। दिन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डे, राइट? डे बोलते हैं ना अंग्रेजी में। सो व्हाट डू वी से? डे इज द कोल्डेस्ट डे। दैट्स द वे। धीरे धीरे करो, इसीलिए इसकी ये वाली जो स्लाइड्स होती हैं वो सबसे धीरे चलती है, सो दैट यू टेक योर टाइम। सो डोंट फोकस कि मेरे कितने कॉइन्स आए, उसको छोड़ दो। वो रिदम के लिए, प्रभात के लिए, प्रताप मैं आंसर किया था, बट वो दो का यूज नहीं किया था। कोई बात नहीं, इन लोगों के लिए छोड़ दो। इनको काफी टाइम हो गया है, ये बहुत विक्टर है, ये सब अच्छे से स्किल्ड हो गए हैं। सो इनके साथ हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें खुद से करना है। ओके, ठीक है? वे हमारी कॉलोनी में सबसे अमीर लोग हैं। Will not use the word beta heaviest. She is supposed to be
My most favorite teacher, you can use that, or you can say that in Hello English, Veena has got the best teaching skills. मेथड कब लगाते हैं? जब आपको साथ साथ में कुछ और चीजें इस्तेमाल में लेनी पड़ती है. हाँ, मैं लेती तो हूँ, वैसे आप कह सकते हैं. आई अंडरस्टूड अजमोल, और मैं जानती हूँ आप मेरे वेट के लिए कभी बात नहीं करेंगे. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अजमोल आपको. सो फातिमा, अल्पना, कृष्णा प्लीज आगे आइए. Pratap, Tanishka and Rhythm have given the correct answer. Please come forward. Yes, ma'am. They are the richest people of our colony. Absolutely. Thank you so much. Just see the change here. The subject has turned into plural, so the verb has also changed, right? This is one learning. Second learning is that we have the base word of richest. What is that, Krishna? Positive of richest क्या होगा? Base word? आज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज टोटली चली गई थी. आप सिर्फ फिर से रिपीट करोगे? हाँ कृष्णा, मैं पूछ रही हूँ कि richest का पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? रिच. रिच, री नहीं. यस. रिच, वहाँ र वही ड्रॉप कर दो. रिच, ठीक है. इसका कंपैरेटिव वर्ड क्या होगा कृष्णा? रिचर. एब्सोल्युटली. और सुपरलेटिव क्या हो गया? रिचेस्ट. तो हमने क्या सीखा कि रिच के पास भी अपना कंपैरिजन करने के लिए वर्ड्स हैं, उसको मोर मोस्ट नहीं लगाना, और वो बेचारा रिबेल भी नहीं करता है. सो रिच, रिचर, रिचेस्ट. हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. Got it? Beautiful, yes. More beautiful, most beautiful. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Stupid, more stupid, most stupid. ये लोग काम में लेते हैं stupid बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है. आ जाइए. वे यह सबसे आसान सवाल था. हाँ बेटा, सॉरी फातिमा, बोलिए बोलिए. सॉरी, was it Fatima? I'm so sorry. No ma'am. बोलो. You wanted to say something, huh? Ma'am, I was there. I ask you afterwards. Okay, fine. Hold your horses, and I'll come back to you. Okay. Great, Pratap. Take your time. आराम से करिए. यह सबसे आसान था. Okay, सपना, अजमोल, मैंने आपके सब. अजमोल, मेरे को कोई, आई अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली. हम बहुत अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को. अभिषेक गुप्ता, थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू मैसेज अजमोल. Abhishek, good morning. You came too late, beta. A lot of things are gone there. Yes, Mamta, continue there. Pratap, Zainab, Fatima, and Krishna. Very good. यह, this, सबसे आसान की अंग्रेजी, सवाल की अंग्रेजी था, पास्ट टेंस है. देख के बनाओ. फातिमा, आओगे जरा आगे? Yes ma'am. बोलो. यह सबसे आसान सवाल था. This was the easiest question. Absolutely. देखा कितना आसान था ना ये जवाब, ये डिफिकल्ट था. This was, अब था के लिए मैंने सिर्फ वर्ब को पास्ट टेंस में शिफ्ट करा. ठीक है, यह दिस रहा. अब सवाल क्या है? क्वेश्चन है. अब सबसे आसान को, थैंक यू फातिमा, एक प्रेशराइज जोर देने के लिए. कितना आसान था ना आज का एग्जाम, कितना आसान था ना. सबसे सवाल कौन सा वाला आसान था? अब ये इमोशनल अगर आपको कहना पड़ा तो आपको जोर देना ही पड़ेगा. इतना इजी पेपर था आज तो. इट वाज, मतलब मैंने आज तक इतना इजी पेपर नहीं दिया. बोलते हैं ना हम, तो आर्टिकल का इस्तेमाल अकॉर्डिंगली करिए. बिना उसके भी करेंगे गलत नहीं होता है, बट इट्स जस्ट दैट वो प्रेशर जो आप शायद देना चाहते हैं वो शायद सामने वाले तक नहीं पहुंच सके. आ जाइए. पेप्सी सबसे कॉमन पेय पदार्थ है. If anybody has to leave at 1 o'clock, I will take 5-7 minutes extra. आपको कहीं जाना है तो जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा. This was the easiest question. Yes, Prachi Patel, correct. Very good, Mamta. Even the answers, yes, correct. The spellings are also coming correct there. This was, yes, Aisha, Prabhat Tiger, Aisha Khan, Sapna Kumari, ma'am. It was नहीं हो सकता क्या? Sapna, just a second. I want to see the question again. Okay. Tanishka. Yes, ma'am. आ जाइए.
Pepsi is the most common cold drink. Okay, very good. So he is supposed to be, which is the adjective? बेटा कौन सा शब्द है ये? Yes, ma'am. I'm saying which is the adjective here, Tanishka? Ma'am, Pepsi. Pepsi तो subject है बेटा, उसके विषय में बात हो रही है ना. Okay, श्रीनिवास आप try करेंगे. Thank you so much तनिष्का. Yes, ma'am. Sure. आपने hand raise किया है ना? हेलो. Yes, ma'am. नहीं मैम, मेरा एक सवाल है, बट वो एक मिनट रुको, सवालों को एक मिनट रुको. Here it is the word common. So when we have adjective common, you cannot have commoner and commonest. So what is going to be? Positive word is common. Okay, more common, and then most common. So positive root word is common. We have the comparative word more common, and superlative is the most common. It is the most common ritual in India. Okay, that is the way we are going to take it. श्रीनिवास और फातिमा अपने questions को थोड़ी देर अपने पास रखो. तुम्हारे पास सबसे छोटा खिलौना है. And there is one more child who had asked this question here with me on the chat. सपना कुमारी, प्लीज रिपीट. आप वो जो पेज था ना उसको जरा लिख लीजिए. आई थिंक इट्स द 15th पेज जिसके लिए आप इट वाज पूछ रही हैं, है ना. एक बार आप रखिए अपने पास में, मैं वापस आती हूँ प्लीज. Yes, absolutely correct, Mamta. Thank you. Pepsi is the most common cold drink. Rushi Kunjan, correct answer there. Continue to type and come there. Pratap, Pratim, Mamta, okay. आ जाइए प्रताप, तुम्हारे पास सबसे छोटा खिलौना है. Yes, ma'am. तुम्हारे पास सबसे छोटा खिलौना है. You have the smallest toy. Smallest toy. यहाँ पे हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव वर्ड और बता सकते हैं प्रताप. मैम स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. Absolutely प्रताप, शाबाश. It is SMALL, SMALLER, दोबारा से रिवाइज करें. सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड जो होता है उसमें आप ऐड करेंगे EST, या फिर आप ऐड करेंगे मोर, या फिर अगर वो आपके कॉन्सोनेंट Y से खत्म होता है वो शब्द तो उसको ड्रॉप करिएगा और IEST लगाइएगा. ये बदलाव है फॉर एडजेक्टिव चेंजिंग इनटू द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इट. कप ग्लास से छोटा होता है. देखो क्लब, अब सेंटेंस चेंज हुआ है, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी नहीं, उसी फ्रेम ऑफ माइंड में मत चलना. वेरी गुड प्रतिम, गुड. कप ग्लास से छोटा होता है. अल्पना, कृष्णा, Baljit and Pratap. Yes, Alpana, please come forward. Srinivas, okay. A cup is smaller than a glass. Very good. So the a cup here. यहाँ पे आपने देखा हमने आपको is smallest भी दिया था और is smaller than भी दिया था. So आप खुद भी अपने दिमाग में ना इतने ही कंफ्यूज हो जितने आपके सामने ये स्लाइड कंफ्यूज कर रही है. और वही मैं बार बार एक ही चीज को समझा. चीजों को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा. So there are a lot of places you will have to really learn that okay, this adjective can be conjugated, this can be added with ER, or this can be added with EST. So the positive has to be very well understood. So great there, Alpana. Thank you so much. And the best part is that I am happy to see that Pratim actually read the sentence and got the feel that, oh, we're not supposed to use the superlative here. We're supposed to use comparative. Great, Pratim. Shabash. Mount Everest दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है. Zeneb, Prachi, Sapna, Deepika, thank you. Very good. Sapna Kumari, shabash. Renu, Akanksha Kumari, correct answer. Sapna, Rushin Kumar, Rushi Kumar, Aisha Khan, Tehrin, very good. Smaller, smallest, very good, Tehrin. Please continue to learn this way. Pratim, Tanishka, Fatima, Alpana, and Preeti have given us the correct answer. Srinivas, just do the needful. Mount Everest दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है. आंसर आता है तुम्हें? I think there is an issue with him. Mount Everest is the highest mountain, HIGH,
higher, H-I-G-H-E-R, highest, H-I-G-H-E-S-T. So comparative में ER लगाओ और superlative में EST लगाओ. ओके अगर I है तो Y है तो ड्रॉप करके IEST लगाओ सुपरलेटिव. वह कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है. Yes, Sapna, I can see Mamta, great. Aisha Khan, Aarti Patel, great. Pratim,